Serial 50, Your Lordship. Serial 50 is a matter where it was admitted by Your Lordship's order in the month of September itself. Thereafter, notices were issued. Notice only sole respondent is there. Notice has been served upon the sole respondent, but despite that, she is not appearing, and they are proceeding with the execution case. And tomorrow is the last date when the writ for delivery of possession would be issued. And there they are opposing by prayer for. Filed a stay petition. Pardon? Have you filed a stay petition? Stay petition is there. It is already pending here. You're for the appeal? Yes. Your Lordship had admitted by the order dated 10/9/2025. Then speed post and all those processes were. Service is completed? Yes, yes. What is the matter? Matter is that, Your Lordship, I was initially inducted as a tenant, but there was an agreement between me and the landlord, and that agreement itself mentions that henceforth you are not required to pay rent. So therefore, there was no relationship of landlord and tenant surviving post. One case I have decided on this. Yes, Your Lordship has also decided, but in that facts were different, where Your Lordship held. I have decided in your favor only. You are not aware. Achha. In one case, I have decided that when in the agreement it is mentioned that henceforth no rent would be paid. I will give you the case. And this agreement itself mentions. And tomorrow is the last date when writ for delivery of possession will be issued. And here they are not appearing. Strangely, and there they are taking steps, all these steps. And we have filed a petition where we have informed that by this order, the Honorable Court has already admitted the appeal on these substantial question of law. There they Government are. bundle of tenants. As. It's 5 minutes. And there was another matter where Your Lordship had heard, and it was posted for passing of orders, serial number 12. It was, Your Lordship had posted for passing of order, but at that point of time it was noted that the appellate court has taken note that my deed was registered in Calcutta. So therefore, only to verify this fact, Your Lordship had called for the original record. I have verified my deed is registered in Ranchi itself, and the power of attorney was registered in. So See that. it may be not necessarily today, whatever is convenient. It is for final disposal, no? It will not go down. As. But you have to wait for your time. Yes. From supplementary list, orders item 1 second appeal, double date of 1984. The contested counsel due to accident and right has been broken and operation हो गया देना accident तो कर गया 6-7 महीना के लिए एजेंट नहीं. फिर क्या करना? वो लोग टेंट आ रहे हैं कौन है काउंसिल? महेश वर्मा को एक्सीडेंट हो गया है देना देख पिछली बार कोई और अपील कहानी खत्म कर सुना आप तो पिछली बार अपील हुई तुम अपील कराइए व्हाट इज दिस पिछली बार somebody else had appeared he argued the case on which the notice was issued I will not permit this नहीं टाइम नहीं होगा इसमें रोज ये केस रोज लिस्ट हो व्हाट डू यू मीन टाइम नो सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर पेंडिंग है सब्स्टिट्यूशन पेंडिंग है उसमें 2 जने मर गए उनका बेट हो गया हम लोग तो कल लिखेंगे दो जने मर गए हैं your lordship has recorded yes I have recorded it yes I informed that was next no every day this case will be listed सबसे पुराना केस है मेरे बोर्ड का इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे I will not permit this 84 का केस में अभी आप पिछली बार तो somebody else was arguing who was arguing आप बस टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शन पे खड़े हो जाते हैं एक्सीडेंट हम पर्सनल जानते हैं हाथ टूटा हुआ है आप ये मत बताइए यहाँ हम लोग रोज देखते हैं किसी काउंसिल के एक्सीडेंट पे बीमारी पे टाइम होता है उसके बाद जब अल्टीमेटली बहस होता है तो कोई और ही बहस करता है आर्गुमेंट दूसरा ही करेंगे कि उनके जो उन्हीं का कोई जरूरत नहीं है आप जिनको एंगेज किए हैं उनको बुलाइए ये कौन की एक सेकंड पिछली बार
नहीं पिछली बार somebody else has appeared. हमको याद है क्या नाम है उनका? नेक्स्ट पिछली बार कौन appear हुए थे? फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम नाम तो उनका दिख रहा है लेकिन काउंसिल कोई और थे हमको याद है। अक्षय कुमार मैं तो करके कोई नहीं लंबी से हम तो वीडियो देख लेंगे आपको तो नहीं नहीं अच्छा पता। आई एम तो ये 7 कौन 7 ट्रेवर फर्स्ट टाइम वो इंगेज किए थे शैलेंद्र कुमार सिंह को हाँ। स्कूल के दिनों में उसके बाद लास्ट डेट में शायद 7 मित्र आए थे। हाँ सेवन यस हमको एकदम फोटोजेनिक मेमोरी है इसका। ये अपीयरेंस कैसे लिखा है कौन लिखा है ये अपीयरेंस? लेकिन उस काउंसिल भी साथ में थे महेश्वर महतो भी साथ ये में नहीं लेकिन जो अपीयर होते हैं उनका नाम लिखना चाहिए ना। हाँ गलत लिखा हुआ है दोनों को रहना चाहिए हमको याद है सेवन मित्र अपीयर and he has told me that he will argue this case whenever the case is taken up on the list. नहीं चलेगा ठीक है कल पे रख दिया हम कर लेंगे उसमें हम कर देंगे। 2 का डेथ हो गया ठीक है इसमें एक है 2C and 5B have been reported dead बाकी को नोटिस सर्व हो गया and 5B इतना भर हम आपको ये केस हम नहीं है आपको कोई आइडिया नहीं है इस केस में कितना कहानी है रिकॉर्ड गुम हो गया है इसका बॉस टाइटल बनाने में हम लोग का दिमाग खराब हो गया दोबारा रिकॉर्ड गुम करवाना है क्या इस बार टाइम मांगेंगे तो 3 साल के लिए मांगिए आप टाइम आइए फाइल करना पड़ेगा आपको टाइम के लिए you'll have to file an interlocutory application seeking time I will not grant you time in this case टाइम मांगेंगे 3 साल टाइम नहीं मिलेगा क्या हो सकता है 6 साल बाद मेरे रिटायरमेंट के बाद वो भी पॉसिबल है 4 का सेकेंड अपील ऐसे नंबर 88 ऑफ 1984 also for the appeal seeks adjournment post-mortem इससे सैबिल मित्रा को पूरा रिकॉर्ड के बारे में जानकारी है उनको लेकर आइए he knows the entire record On hearing item 2, second to 68 of 2002. आपका सारा सबमिशन का लिखा दिया हम इस बार हो गया आपका सारा जी सबमिशन लिखा जी दिया The case was substantially heard yesterday and the basic arguments of the appellant and the arguments of the appellant as well as the foundational case of the parties has been dictated in open court. The order is reserved. Reserved करके हम चेंबर में लिखा है। जी इतना टाइम लगेगा नहीं यहाँ नहीं पे जी बोलने में। ओबला ठीक है विनीत जी ये कल मुकुल इसने लिखे हैं उनको चेंबर में भेज दें ओबला हाँ सी For finance to item 3, second ये to चेक करिए वो जजमेंट एक साइड किए तो वो होना चाहिए फाइल 2003 10 SPC पेज 3 हाँ है होगा उसमें नहीं नहीं उसमें ऊपर ही होगा देखिए सबसे लास्ट में शायद यही वाला इसको बांध दीजिए
For science item 3, second appeal 205 of 2010. But in this case, we have filed a degree application on giving additional substantial question. You made 36. No, IE number is 17442. That is for state. That is for state. 17. That is for stay. 17136. 17136. An application under section 100 within bracket 5 of CPC. That is 28236. That is not the number. The number is 1744. Yes, that is 105 for having substantial question. Well, the additional substantial question of law which we want to learn, that it should be clearly given in para 6. Already two substantial questions of law had already been framed in this case. But the matter relates that the plaintiff instituted a suit for eviction of the defendant. There is a substantial question. Yes. Substantial question of law which has been framed in this case. But when nominated 1st of March 2011, this Honorable Court has admitted the appeal after holding substantial question of law C and D. But it was wrongly recorded, thereafter to that extent only the correction was made by order dated 9/10/2014. The two substantial questions of law which have already been framed is whether while forming the judgment and decree of the honored trial court, whether the lower appellate court committed gross illegality in ignoring Exhibit 4/A, the recital of the city, it does not disclose anything about the alleged environment and also about the adjustment of ₹17,000 paid at the time of the delivery. Second word, while affirming the judgment and decree of the honored trial court, the lower appellate court heard in misconstruing Exhibit B and C, judgment and decree passed entitled suit number 37/95, which held that the respondent did not acquire any valid title on the basis of the credit of the disputed land and the house. These are already framed. The substantial question of law, which we want to know that it may be framed, that is whether this eviction suit was maintainable in view of the nature of the dispute between the party which pertains to title and ex parte decree dated 14/2/1996 passed in 36/27/1995 in favor of the lady, wife of the appellant who has not been made party in this. What does this mean? Explain. मतलब सेंटेंस ही डिफेक्टिव है आपका, तो सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, मतलब तो है, बताइए। मतलब यह है कि सूट इविक्शन सूट जो था, इविक्शन सूट जो है was itself not complete. That is another thing. But what have you written? An ex parte decree dated 14/2/96 passed in title suit number 37 of 1995 in favor of Chameli Devi, wife of appellant who has not been made party in this suit. So क्या मतलब? In this particular case, the decree is in favor of the Chameli. That is title suit number 37/1990. This case arises out of title suit number 37 of 95. No, this case arises of eviction suit.
Then under such circumstances, what kind of substantiation of law have you? But then- I'm not able to understand. ये हिंदी अंग्रेजी बंगला कोई में सिखाई हमको. समझ आया? if the lordship is not agreeable to Malad. Not agreeable. It is not making sense. No, it does make sense. The language is so defective. I'm not able to gather anything out of But it. anyway, Malad, the next one is more Yes. clear. Whether the Malad court will have failed to appreciate that the plaintiff only to circumvent ex parte decree instituted in Vision Suit number 9 of 96, which itself was not met. What do you mean circumvent? Circumvent means there is a decree, there is an ex parte decree in my favor. Saying what, that you are the title holder of the property? Yes, that is what. No, I Yeah, object. allow me to. No, I will allow, but I just. No, I will hear you. Yes, I'll hear you. just Yes. 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 No, I will like, but initially, yes, yes. Not our case fellowship, that Lord was not Techni Devi, the mother of the defendant of the law. She disputed a Batwara Nama in the favor of the wife of the defendant, that is the Chameli. And in that Batwara Nama, the property in which one of the defendant is residing, and for which the eviction suit has been filed. That property was allocated to the wife of the defendant. When Under what provision? by whatever property belongs to Mosmar Technical. This is an admitted fact. Mother. Mother of the defendant. They claim property by virtue of. I don't know. How can the title pass through Batwara? The title is already there. Title is with mother. Technically. Title was with mother, and mother during his lifetime he partitioned the property and gave it to the defendant, the wife of the defendant number one. The property belongs to the mother. Mother, Her own property. yes, she. Then how can she transfer that property by way of Batwara now? Anyway, that what is my case that I'm saying. Thereafter, when the property was allocated to Chameli Devi, thereafter, when they started troubling us, this position wanted to dispossess from the property, then the Chameli Devi instituted a suit that against the defendant number that plaintiff hearing, plaintiff number 1, and the Mosmart Technical accused. But despite valid service of notice, neither the Mosmart Technical Devi appeared, and plaintiff also did not appear. And the suit was decreed ex parte. In that particular suit, it was decreed that the property over which the Chameli Devi is residing, they sell it by virtue of which they claim title. That will not be affected. No, I don't get it. The property was declared to be the property of Chameli Devi. Her title was declared. Yes, yes, Show me the deed. yes. Exhibit number. Exhibit B and Exhibit C. Exhibit B is the judgment. It is a short. That's right. It means that defendant number 2, right? The by virtue of the sale dated 14/3/1995,
Defendant number 2, namely Ranu. Ranu. She was the plaintiff in the eviction. Ranu Rani will not acquire any title. Will not acquire so far as the property over which this Chameli Devi is residing. No. So the decree was, just a minute. वादिनी का वाद एक पक्षीय रूप से बिना बचाव के डिक्री किया जाता है तथा यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी की संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित डिक्री पर डिमांड 1495 द्वारा वादिनी के हक से में आवंटित 2.5 डिसमिल जमीन जिसमें पक्का मकान बना हुआ है तो कोई स्वार्थ प्राप्त नहीं। ठीक। Okay. Who is the plaintiff here? Plaintiff is Ranu Rani and plaintiff was Ranu Rani and her husband Vinod Kumar Sinha. Ranu Rani and Vinod Kumar. Sinha. They both have that. Her legal heirs have been substituted. They claim title on what basis? On the basis of the sale, which was executed by Moswar Tekni Devi in favor of Ranu. And who is the defendant? Who is the defendant? Defendant is the son of the Moswar Tekni. Son of defendant number 1 of this case. Well, this decree. Let us see the plaintiff. Kindly appreciate this decree. Plaintiff. Yes. Plaintiff Lashmi पे kindly see. But certain dates are very relevant. Show me from the plaintiff. Yes. Their case, Your Lashmi. First, you are the defendant. I am the defendant. They have purchased the property from Moswar Tekni Devi. Their claim, Your Lashmi, that for 20,000 rupees, there was an agreement. And out of which the 17,000 was already paid and 3,000 balance amount was to be paid. That is the nature of their pleadings. And they claim that on the 14th of March 1995, the sale deed was disputed by Moswar Tekni Devi in favor of the Ranu. And their claim, Your Lashmi, that they had purchased the property along with kacha house, kacha rooms, and they make it paka and let it to defendant number 1. And there was a oral tenancy and the last paid rent, Your Worship, was February 1996 and their cause of action started on 3/4/1996 and 5/5/1996. But when the plaint was filed, will find there was no schedule. Later on, in the year 2008, they amended the plaint and they added the boundary and the suit property. But not the relevant dates I am saying so because ex parte decree, Your Worship, which was passed 14th of March 1996. And our cause of action was to show what was the cause of action was. I have brought on record. It was 96. 14th February 1996. 14/2. My Lord may kindly see the plaint which I have brought on record by way of supplementary affidavit of the title. Record में है प्लेट. ये रिकॉर्ड में वो वाला प्लेंट रिकॉर्ड में नहीं है. हमने इंटायर ऑर्डर शीट ऑफ प्लेंट उस टाइटल सूट का भी रिकॉर्ड उससे आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री से कुछ नहीं प्लेस कर सकते. आपको जो प्लेस करना है आप खाली हम इस चीज को दिखाने के लिए कुछ दिखाने के लिए ऑर्डर से हम दिखाने देखेंगे ही नहीं कुछ. ऑर्डर से जो एनसीआर में है उसके अलावा कुछ नहीं. हमारा इसमें कॉज ऑफ एक्शन यही था कि हमको जो बंटवारा नामा में 3795 में मेरा बंटवारा नामा में जो प्रॉपर्टी मिला था चमेली देवी को,
जब ये हमको डिस्पोजिशन करने लगे, हमको हटाने की कोशिश करने लगे, तब ये सूट फाइल किया। ये हमारा कॉज ऑफ एक्शन है और टाइटल सूट के जजमेंट में नहीं, उससे हम नहीं देखेंगे ना, जो आपके रिकॉर्ड में है। हाँ, वो रिकॉर्ड में है, टाइटल सूट का जजमेंट तो रिकॉर्ड में है, एक्स पार्टी जजमेंट तो रिकॉर्ड में नहीं, एक्स पार्टी जजमेंट तो रिकॉर्ड में है। एग्जिबिट बी में भी वो बात लिखा हुआ है, उसको खाली हम सपोर्ट करने के लिए प्लेंट लाए। नहीं, सपोर्ट करने के लिए कोई- प्लीज आप ऐसा मत करिए। आप तो सिविल प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ, करेक्ट? यू आर द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, कुछ भी सप्लीमेंट्री में फाइल करेंगे। रिट पिटीशन है ये, इज इट अ रिट पिटीशन? जो मन होगा सप्लीमेंट्री में फाइल कर देंगे। एक बार जो पहले नहीं देखेंगे। एक केस पहले एक बार बहस हुआ था, उस हुआ होगा कहा बहस। गया लेकिन था ऐसा इसमें- कोई प्रोसीजर है सीपीसी में? सप्लीमेंट्री में फाइल कर देंगे कोई डॉक्यूमेंट उठाकर? हम इस पे कोई नई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करते। अगर जो हम जो उसको डॉक्यूमेंट देखिए, जो डॉक्यूमेंट आपके रिकॉर्ड में है उसमें हमको कोई इशू नहीं, ठीक। उसको भी हम एलसीआर से ही देखना पसंद करते हैं। नहीं ठीक, The reason is there are so many cuttings, so many amendments which are incorporated in the ठीक, plaint. ठीक। अब आपके पास जो plaint है आप उसको लगा दीजिएगा, नहीं देखेंगे लेकिन आप हम उसको दिखाएंगे नहीं। हम खाली इतना कहना चाह रहे थे, हम ये हुजूर को ये बताना चाह रहे हैं कि एक्स पार्टी डिग्री जो 14 फरवरी 1996 को पास हुआ था, उसका कॉज ऑफ एक्शन ये था कि जब मदर चमेली देवी ने टेकनी देवी ने जब चमेली देवी को वो सूट प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी जो है जो इसको इनको दिया, तो देने के बाद जब इसमें ये रह रही थी और ये सब चीज़ कर रही थी, तो जब इनको डिस्पोजेस करने के लिए इन्होंने कोशिश किया तो ये सूट लाई, और वो सूट में ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है, ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इस पर इनका जो कि जजमेंट एंड डिक्री जो हुआ है, ये इससे इनका उसका टाइटल सूट इनका केवाला उस पर असर नहीं है, केवाला से जो प्रॉपर्टी। अब ये 14 फरवरी 1996 डेट इज वेरी रिलेवेंट, उसको सरकमवेंट करने के लिए ये एक इविक्शन सूट ले आए, जिसमें बाउंड्री वगैरह पे भी इस तरह का फेरबदल करके ये ले आए, और लाने के बाद ये इस चीज को दोनों कोर्ट इस चीज को नहीं समझे और इसको ये जो होल्ड कर दिया कि नहीं, इनका लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप भी है और इविक्शन का डिग्री भी पास कर, और अपील कोर्ट भी इसको अप्रूव। ये छोटा सा एक इशू है हमारा, इसमें इतना ही कहना है कि ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं था, सिर्फ इसी बाबत एक पॉइंट ऑफ लॉ हम फ्रेम करवा रहे थे। और इसमें देर आर सेवरल जजमेंट, हजूर का भी जजमेंट है इसमें, कि राजेंद्र तिवारी का जजमेंट है, समीम अख्तर, इकबाल अहमद का जजमेंट है कि इसमें रेंट सूट्स में लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है, क्वेश्चन ऑफ टाइटल को आप नहीं देख सकते। और ये इशू जो है, ये इशू ऐसा नहीं है कि आई एम रेजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दोनों कोर्ट ने इस पर जजमेंट किया, और ये पॉइंट ऑफ लॉ हमारा एक पॉइंट ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मेरा राइज करता है, और ये अगर ये रूट ऑफ द रूट कॉज तक ही जाएगा, अगर ये सूट का मेंटेनेबिलिटी नहीं होगा तो When was the previous suit filed? प्रीवियस सूट 1995 हाँ, कब फाइल? का बता। The sale date is 14/3/95. The decree is 14/2/96. What is the date of institution of the suit? मेरे सेल के बाद आया है, उसी एग्जिबिट बी में जिक्र किया हुआ है। मेरे जो सेल है उसमें बाद आया, वो एग्जिबिट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इन्हीं के डॉक्यूमेंट पे दोनों कोर्ट ने फाइंडिंग दिया कि दोनों का इनका जितना आर्गूमेंट अगर अलाउ करेगी तो हम बता देते हैं, स्पेसिफिक फाइंडिंग है इनके एग्जिबिट पे जिसको प्लेस कर रहे हैं, केवल वो पार्ट वो शो नहीं किए माय लॉर्ड को, उसमें फाइंडिंग है कि जो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ को सेल किया गया उसका चौथी इनके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, और जो बंटवारानामा अनरजिस्टर्ड है उसको भी मान लिया आपको,
बोला अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों का बाउंड्री अलग है, स्पेसिफिक फाइंडिंग, 25/4 फिर भी कर रहे हैं कि सर्कमवेंट करने के लिए। 25/4/95। मार्च 95 का सेडिट है, 25/4/95 को हमने सूट फाइल किया, तो चमेली देवी फाइल किया हमने 14/3/95 सेडिट है। और सूट जो चमेली देवी ने डिफेंडेंट नंबर 1 की जो वाइफ ने फाइल किया था सूट, वो सूट का डेट, फाइलिंग का डेट 25/4/95। उनका लिखा नहीं थोड़ा सा। हाँ। The learned counsel for the appellant has submitted that आइए नंबर बताइए सर। One 7,442 of 25 has been filed for claiming additional substantial question of law. Additional substantial question. While referring to the additional substantial question of law, he has not relied upon proposed additional substantial question of law number 3. Rather, he has placed the proposed substantial question of law, additional substantial question of law number 4, and has submitted that earlier one title suit was filed by Chameli Devi, wife of Bajrang Ram, against Mosama Tekni Devi and Srimati Ramu Rani, wherein a prayer was made that it be declared that the defendant number 2 within bracket Ramu Rani did not acquire any title by deed number 2152 dated 14/3/1995, and we also declared that the said deed is invalid and is not a same deed at all. He submits that the suit was numbered as title suit number 37 of 1995, which was instituted on 25/4/1995, and decree was drawn and a judgment was passed on 14/2/1996, and the decree was drawn on 23/2/1996. The suit was decreed ex parte by holding that the defendant number 2 did Despite not, service of notice, they have not appeared. by holding that the defendant number 2 had not acquired any title with any title with respect to the sued property by virtue of the sale deed dated 14/3/1995. Deed का number है 2152 dated 14/3/1995. The schedule of the property in the sale suit was Schedule A of continuous. Thana number 141, Khata number 154, plot number 379, area 2.5 decimal out of 6 decimals.
मोहल्ला मून का बगीचा, PS and District Hariwara. Bonded as North Rasta, South Vacant Land, East House Techni Devi, West Vacant Land. The Learned Council has submitted that since the registered sale deed dated 21/2/152 dated 14/3/1995 was subject matter of consideration in the earlier suit, and it was held that the defendant number 2 in the state suit, namely Srimati Ranu Devi, had not acquired any title by virtue of the registered sale deed. Therefore, the present suit by Ranu Devi seeking eviction of the present suit by Ranu Devi and her husband seeking eviction of Bajrang Ram, son of Mausama Techni Devi, was itself complete. He submits that accordingly the proposed substantial question of law number 4 be framed as the learned courts have failed to appreciate that the present suit was filed only to circumvent the ex parte decree dated 14/2/1996 passed in title suit number 37 of 1995 in that's all bataya मतलब exhibit no B, other additional substantial question of law has been pressed during the course of no, मतलब exhibit B, kindly again have a look into it, मतलब. The document which has been exhibited by the defendant themselves and which has been relied by my senior friend, मतलब kindly have a look to exhibit B, third page, मतलब. Page number 3, may I read, Miller? Exhibit B, this yes exhibit B. प्रदर्श 2/A विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसके द्वारा टेक्नी देवी, इनकी मदर, ने श्रीमती रानू देवी, जो प्लेंटिव थी, ओरिजिनल प्लेंटिव, को 2.5 डिसमिल जमीन का विक्रय किया है। इस विक्रय पत्र द्वारा टेक्नी देवी ने किसी खपड़पोश मकान का विक्रय दिनांक 4/5/95 को किया है। इस विक्रय पत्र एवं बंटवारानामा में अंकित प्लॉट की संख्या 379 है तथा दोनों ही विलेखों में 2.5 डिसमिल जमीन का अंतरण किया गया है। बंटवारा विलेख में पक्का मकान एवं कुआं वादिनी को दिया गया है, परंतु विक्रय विलेख द्वारा खपड़ा पोष मकान बंटवारा बेचा गया है। दोनों विलेखों में 2.5 डिसमिल जमीन की चौहद्दी अलग अलग प्रदर्शित किया गया है। विक्रय पत्र विलेखों के साथ एक नक्शा भी संलग्न है जिसमें प्लॉट नंबर 379 का क्षेत्रफल बहुत बड़ा प्रदर्शित किया गया है तथा उसके एक कोने में 2.5 डिसमिल क्षेत्रफल को बेचा जाना प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श 2 उस विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसके द्वारा टेक्नी देवी ने 2 डिसमिल जमीन प्लॉट नंबर इतना लाचो देवी से 1500 रुपये में 1/81 को खरीदा गया था। साक्षी संख्या 1 ने बंटवारा नामा विलेख प्रदर्श पर अपने हस्ताक्षर को सिद्धित किया है। चमेली देवी ने अपने साक्ष्य में बंटवारा नामा में मिली संपत्ति पर अपना दखल काबिल साबित किया है। वाद संख्या निबंधन कार्यालय के इतना है जिन्होंने प्रदर्श 2 तथा 2/1 किया। अभिलेखों पर उपलब्ध वादिनी के साक्ष्यों को ठुकराने या अविश्वसनीय मानने का कोई अधिकार मेरी समझ नहीं है। अतः वादिनी का वाद इस तरह पे इम्पोर्टेंट इस सीमा तक डिक्री किए जाने योग्य प्रतीत है
कि प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादिनी संख्या 2 के पक्ष के में निष्पादित विक्रय पत्र से वादिनी के स्वत्व एवं दखलबाजी के कब्जे वाले जमीन में प्रतिवादिनी संख्या 2 का कोई अधिकार एवं स्वतंत्र नहीं होता है। इनका जो लैंड पे क्लेम है, एंड माय लॉर्ड हैज करेक्टली अप्रिशिएटेड माय लॉर्ड द बाउंड्री गिवन इन द डिक्री ऑफ दैट sort. This decree has been different, and this has been very well discussed by both the traffic courts. The sale deed has not been declared null and void. ना वही तो कह रहे हैं, वो तो बोले कि उससे दो, इसीलिए वो कंपेयर कर दिए इनके इन्हीं वाले सूट में जिसपे ये रिलाई कर रहे हैं, उसमें लर्नेड कोर्ट ने कंपेयर कर दिया इनका डॉक्यूमेंट और मेरा डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपियर नहीं किए, और दोनों को अपियर करके बोला कि भाई दोनों का चौहद्दी अलग अलग है। अब डिक्री में भी दे दिया और बोला कि चलिए जब चौहद्दी अलग है तो इनका राइट है, इनका डीड से कैसे अफेक्टेड होगा। दिस फाइंडिंग वाज गिवन and this has been appreciated by both the courts. बहुत अच्छे से डिस्कस है। अगर देखेंगे माय लॉर्ड विल फाइंड इंडिया अपिलेट कोर्ट्स जजमेंट माय लॉर्ड इन पेज नंबर 8, इंटरनल पेज नंबर 8। एक्चुअली जब लगता है ना तो समझ एडिशनल सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बीइंग ट्राइड टू बी फ्रेम्ड। नाउ इंटरनल पेज नंबर 8। वकील साहब कुछ तो हम लोग तो वही कर सकते हैं और कोई उपाय नहीं, हम भी उधर से रहते हैं, वही करते हैं। हम लोग इस सर से ही सीखते हैं और इसको करते हैं। नहीं 2 बार फ्रेम हुआ सर, एक बार देखिए, एक बार हुआ 21/3/11 को, नहीं 21 सर ये रेगुलर चीज है, उस पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है ना उस वक्त वकील साहब ध्यान नहीं देते, बन गया एडमिट हो गया काफी है, बाद में देखेंगे, और जब बाद में देखेंगे तो 2025 से एडमिट होता है तो लगता है कि ये रेगुलर है सभी के साथ। कोई हम लोग नया नहीं है, कोई नया बात थोड़ी बोल रहे हम लोग भी तो यही, लेकिन इसको इसीलिए हम सुनते हैं क्योंकि हमको पता है कि जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है तो एडवोकेट्स उतना ध्यान नहीं देते हैं कि देयर मे बी मेनी अदर पॉइंट्स व्हिच कुड हैव बीन फ्रेम्ड, इसीलिए सुन के ही ऑर्डर, ऐसे बिना सुने आपका पिटीशन नहीं ले नहीं करते, किसी का नहीं करते। मैडम चाहिए कि इंटरनल पेज 8 देखा जाए, अपीलेट कोर्ट्स लर्नेड अपीलेट कोर्ट्स के जजमेंट का एविक्शन अपील 9/2008 to save the my lord's valuable time, internal page 8, eviction appeal 9/2008। इंटरनल पेज 8 यस, नीचे में दाहिने साइड में लिखा हुआ है पेज नंबर करके टाइपिंग में, पेज 7 पेज 8 पेज 8 में देखेंगे एकदम चार्ट बना करके दोनों को बाइफरकेट कर दिए लर्नेड अपील फर्स्ट अपील, very minutely examine each and everything, and thereafter this finding has been given। फाइंडिंग केवल पढ़ देते, माय लॉर्ड ने चार्ट देख लिया, लिखा है from the above discussions I am of the considered view that appellant cannot say that the suit premises involved in this eviction case is subject matter of bhatwada finding। The learned counsel for the respondent has opposed the pair of the appellant so far as claiming of additional substantial question of law is concerned, and he submits that Chameli Devi claimed the property from claimed the property from Chameli Devi claimed certain property from Tekni Devi, stating that she acquired the same through Bataranama, and it was said property which was subject matter of consideration in the earlier title suit. He submits that the judgment of the title suit has also been exhibited and marked as Exhibit B. He has placed the said judgment and has submitted that the court was clear in the earlier title suit that the property which was claimed by Chameli Devi through Bataranama was different from the property which was claimed
the property which was involved in the sale deed number 2152 dated 14/3/1995. The learned counsel submits that this aspect of the matter has been duly considered by the learned first appellate court in internal page 8, and a clear finding has been recorded that Vajran Ram, the defendant in the suit, who was the appellant before the learned first appellate court, that the suit premises involved in this eviction case, it could not be said that the suit premises involved in this eviction case is subject matter of Bhatwaranama. And hence the admitted pleading in written statement of defendant / appellant that he has been residing in the subject matter of the eviction suit on the basis of Bhatwaranama had no legs to stand. The learned counsel has submitted that the exhibit B was based on Bhatwaranama and the suit premises in the present case is distinct, and therefore no additional substantial question of law arises in this case. The finding recorded by the learned first appellate court is essentially a question of fact which has been considered after appreciating and intelligence of the document. After hearing the learned counsel for the parties and upon going through the exhibit B, exhibit C, and also the discussions made by the learned first appellate court, it is apparent that the plaintiff in Chameli Devi in title suit number 37 of 1995 was claiming property, a portion of property of her mother-in-law Tekni Devi through Bhatwaranama, and the identity of the property involved in the present case in connection with the registered sale deed dated 14/3/1995 is different, and such finding has been recorded by the learned court. This court is of the view that the aforesaid additional substantial question of law, which has been relied upon by the, which is sought to be framed through the IA number such and such, is devoid of any merits, and accordingly the same is rejected. I have also framed with respect to one substantial question that on comparison of the boundary that is also a purpose. आपको पूरा सुन के ऑर्डर किया है, ठीक है? अब आप अपना मेरिट पे बैठ सकते हैं। वो आपने प्रेस ही नहीं किया है एट द टाइम ऑफ, चलिए वो हम दिखाई नहीं है that only this substantial question of law has been addressed. Yes, so what is the substantial question of law now to be decided? Two substantial questions of law has already been made. Yes. First one is whether while affirming judgment and decree of the learned trial court, learned lower appellate court committed gross illegality in ignoring exhibit 4 by a recital of the said, which does not disclose anything about the alleged deed of agreement and also about the adjustment of rupees 17,000 paid at the time of the alleged agreement.
whether by affirming the judgment and degree of the learned trial court, learned your appellate court heard in misconstruing exhibit B and C, judgment and degree passed in the title suit number 37 of 1945, which held that respondent did not require any valid title on the basis of the sale on the disputed land and the house. These are the two substantial questions. But the case of the plaintiff, your Worship, that she along with her husband purchased suit property by virtue of 14th March 1995. Prior to that, Plaintiff and her husband both both. joint purchase. Yes, for purchase in the name of Ramurani, Plaintiff. the plaintiff. Purchased how much? Sale deed number 2152, dated 14th March 1995. 14/8/1995. Okay. Prior to that, their case is that on 18th of January 1995, Bosman Tekni Devi had entered into an agreement with Ramula. And the agreement was that altogether 20,000 rupees will be paid. Out of that, they claim that 17,000 was paid at the time of agreement itself. And $3,000 was to be paid at the time of the registration. Their case will achieve that because of some strike or something like that, the sale deed was not disputed on the 18th of March 1995, and on the 14th of March 1995, the sale deed was disputed. That is the basis of the agreement. Thereafter, their case will achieve that plaintiff's husband, he constructed Pakka house, and defendant number 1, your Lordship, requested him that the property may be let out to him, and he was allowed to remain in the property. And in the month of February 1996, When was he inducted as tenant? rupees 50. When was he inducted as tenant? March. March 1995. After purchasing and after he constructed, remodeling. March 1995. At the rate of rupees 50 per month. Per month. And their claim, your Lordship, that February 1996 he paid rent and thereafter he stopped. Thereafter, the defendant demanded rent from the plaintiff, demanded rent from the plaintiff on 3rd of April 86, 3rd of April 1996. There is a finding on landlord-tenant relationship. Yes, That is not a substantial. that is not substantial. There is a finding on default. There is a finding of default. There is not. That is not a substantial. That is not substantial. Then what these substantial questions of law has it? Substantial questions of law, your Lordship, exist even if though I have specifically framed one that is not agreeable. But the second one, even which has already been framed, that is the same. That is this question of law that whether both the courts have correctly appreciated Exhibit D and Exhibit C. That is the main substantial question. And from the chain of events that I just showed, your Lordship, may kindly appreciate. The ex parte decree, your Lordship, was passed on 14th of February 1996. You see, the point is whether the ex parte decree was in connection with this particular property or not. Whether the identity of the property was same or not. But That is not a substantial question. both the courts
though I have said, but your lordship may kindly appreciate, merely because there is some error in the boundary. But not, they cannot be taken advantage. But they cannot That be is allowed not the to be taken. substantial question. That is the substantial question. No. If your lordship will correctly appreciate exhibit B and C, my lord will come to finding that it is actually the real purpose is to circumvent that law, nothing more. And if your lordship, even if my lord says, the properties are sub for a moment, properties are. There is a But- Kachcha house even in the boundary it was given. No, I'm saying something else. Your lordship, just my lord may hold it that I will not be evicted from the property on which I am residing by virtue of the Batwaranama and by virtue of ex parte. That is not the need. That what I'm saying. You see, at the time of execution, But you can still say that this is the property No, which I am deciding. that what I'm saying. My lord, if my lord will only clarify this much only, I have nothing to say because I know that my lord, the boundary they have intentionally inserted, and because of that only they are now want to evict us from the property which has been given to me by my mother. If at all See, the boundary- whatever boundary has been mentioned Well, in the ex parte decree, well, there is no question of eviction. Now when, you see, the point is that whenever they go for execution, and they find that you are residing in the boundary which has been given in exhibit B or exhibit C, you cannot be my evicted. lord, as per my instruction, it is the same. I only Maybe. want to say. I You only see, the want to say. point is that if you are residing in the boundary Well, which is mentioned in exhibit C, well, you cannot be evicted. that's all. That much I want You should be protection. happy with Nothing. that. Your lordship may No protection is required. It goes without saying. protection. Once they say that the identity are different. My lord, Then may under kindly such appreciate. My lord, in the execution proceedings, particularly my lord, nowadays, my lord, No. particularly nowadays, I am saying because of a reason. Now, my lord, the moment the writ is issued, my lord, the Nadir does not care that what is the boundary, nothing You like see, that. the schedule of the property in the present suit is clearly distinct from the schedule of the property in exhibit C. But the properties are same. And I'm saying so, my lord. I'm saying so. We can't say I'm anything. saying so. Your lordship may kindly see, my lord, the cell deed on which they want to rely. Your lordship may kindly see their cell deed. It is mentioned in the schedule A. Your lordship may kindly see the cell deed. But may kindly see the cell deed. That is exhibit. Exhibit 4 है मैडम. Exhibit. No, exhibit 4. My lord, may kindly see the cell deed. Most one technique did my lord find? नौस्वार टेक्नी देवी पति स्वर्गीय लीलोराम लेखाधारी श्रीमती रानी लेखा का प्रकार विक्रय के वाला 20,000 रुपया डाइव डिस्प्ले जमीन मनोट में काइंडली सी दी डिटेल्स which is on the next page. मकान खपड़पोश वो तहे जमीन परगना चंपा थाना सचन Their claim will be that by virtue of this deed, along with 2.5 decimal, they have purchased the Kapadnos house. Now, my lord, may kindly see the plan. May kindly see the plan.
खप्पड़ पोस्ट में चौहद्दी भी है ना? हाँ स्पेसिफिक है तीसरा बताइए, कहाँ है दूसरा आपकी दूसरा जॉब? पेज पे आप बताइए। एग्जिबिट 4 का जहाँ जो 2 लाइन दिखा के सर छोड़ दिए हाँ। उसी के नीचे आएंगे ना एग्जिबिट 4 में कपड़ा जहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉट नंबर 379 12 डिसमिल हाँ, रकबा ठीक है। टेकनी देवी का 2.5 डिसमिल और उसमें देखिए स्पेसिफिक बाउंड्री है माइलर उत्तर 154 379 के नीचे उत्तर रास्ता दक्षिण रामू कुमार पूरब सुमित्रा देवी पश्चिम बसंती देवी वाक्य लिखा हुआ क्लियर है आपका बाउंड्री तो लिखा हुआ है। हम दूसरा चीज दिखाना चाहते हैं। वो खबर पोस्ट हाउस हमने दिखाया, आप खप्पड़ बोर्ड हाउस के साथ उसकी आइडेंटिटी हम इसको और एक दिखा चीज आप देखिए, हम जो दिखा आपका जो सूट था, जी आपका जो सूट था हाँ उसमें जो है वेंडर का एक घर दिखा रहा है हाँ एट द बाउंड्री। टेकनी देवी एक टेकनी देवी का घर दिखा रहा है एट द बाउंड्री। 4 नंबर पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है। नहीं, आप हमारी बात को पहले रिस्पॉन्ड तो करिए ना। हाँ। आपका जो बाउंड्री है, जो सूट है आपका बाउंड्री एग्जिट सी, राइट? उसमें देयर इज अ एट द बाउंड्री योर जिन्होंने आपको बंटवारानामा से दिया टेकनी देवी, उनका घर दिखा रहा है। घर तो उसमें दिखा है, तो फिर दिखा रहा है। टेकनी देवी की मदर है आ जाती बदल लो, वो उसके दूसरे भाई का घर है। किसी भी भाई का, उससे क्या वो- मतलब वो- बंटवारानामा है? में टेकनी लिखा देवी हुआ है। के नाम से एक घर दिखा रहा है। बंटवारानामा में ये बात आया है, उसको भी दिखा रहा बंटवारानामा का छोड़ दीजिए, उससे हम नहीं देखेंगे है। उससे। नहीं वो डायरेक्ट नो, वी विल सी और एग्जिबिट सी, नो। हम एग्जिबिट ये है बंटवारानामा के नाम पे कोई यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। एग्जिबिट ई को हम दिखाते हैं। You see, हम क्या दिखाना चाहते हैं, थोड़ा 1 मिनट हमको सुनिए। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने खरीदा कच्चा कपड़ा पोस्ट हाउस और उसके बाद इनका कहना है हमने रिमॉडल करके उसको पक्का बना दिया और उसमें हम ऑलरेडी रह रहे थे। ये भी आया है, इसमें हम एविडेंस से भी दिखा देंगे और इनका गवाह खुद ने कहा है कि हाँ ये आदमी इसमें रहा। तो एक चीज सोचने की बात है कि 14 फरवरी 1996 को एक पार्टी डिग्री हो रहा है। 25/4/95 को हमने सूट फाइल किया इमीडिएटली आफ्टर दिस डेट। 14 फरवरी 1996 को उसमें डिग्री हुआ। उसके बाद ये सूट फाइल कर रहे हैं जुलाई में, अगस्त कॉज ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं मार्च में। ये सारा चेन ऑफ एविडेंस को इसको एक बार इसको एनालाइज करने से एकदम क्लियर है हुजूर कि ये इसको आइडेंटिटी ऑफ कर प्रॉपर्टी ही फर्क है, तो फिर क्या ही क्लियर? नहीं, आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने जान करके फर्क किया है माँ के द्वारा बेचा गया और सिटी को चैलेंज नहीं किए उसका कारण है उसका माँ को नहीं लाए उसका कारण ये है कि ये पहले तो बाउंड्री दिया ही नहीं प्लेन, जब बाद में अमेंडमेंट लाए बाउंड्री में, प्लेंट में भी बाउंड्री नहीं था। हजूर देखा जाएगा प्लेंट को क्या 2008 हो गया? आपको मौका मिला ही होगा ना। नहीं मौका मिला, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जब प्रॉपर्टी मान लीजिए एक ही है और ये खास करके उस डिग्री को इस तरह से इविक्शन सूट ला रहे हैं, तो इसका इनका इंटेंशन तो सिर्फ और सिर्फ उसको डिग्री को हमको सर्कमवेंट करना, मेयरली बिकॉज अगर बाउंड्री में थोड़ा बहुत फर्क कर दिए तो इससे हमको इविक्शन सूट ला ये करके जो फाइंडिंग रिकॉर्ड हुआ था ना आपके एक्स पार्टी डिग्री में, आपका उसमें केस था क्या कि उसमें बाउंड्री गलत लिखा हुआ है सेल्डी में? हमारा तो सेल्डी तो हम उसको चैलेंज किया ही थे, हम तो कह रहे थे सेल्डी सेल्डी चैलेंज गलत किए है। थे, लेकिन क्या आपने बोला था कि सेल्डी का बाउंड्री गलत है? हमने इंटायर सेल्डिट को ही चैलेंज किया था, एग्रीमेंट को भी कहा था कि मैन्युफैक्चर्ड एग्रीमेंट, हमने सब चीज किया था। इससे कोई मतलब नहीं है ना, सेल्डी एग्जीक्यूट हो गया। Seldit देयर वाज एन execute एक्स हो पार्टी गया। डिग्री, आई जस्ट वांट टू नो। लेकिन कोर्ट ने तो ये बात कहा है ना हुजूर कि इसको सेल्डिट जो एक्सिक्यूट हुआ है उस पर हम जिस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं उसको वो इनका सेल्डिट हमको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और बस इतना ही लिखवा दें, हमको इससे ज्यादा कुछ इससे क्या मतलब है? लिखाने की क्या जरूरत है? देयर इज ऑलरेडी अ डिग्री। नहीं। इसमें लिखा, इसमें आया है, जजमेंट में आया है क्या? इन्होंने विक्रय पत्र में चौहद्दी का भी गलत विवरण कर 3795। फाइंडिंग है ये। हाँ मैंने हम हमारा एक पार्टी जजमेंट हम पर हाँ, उसमें ये फाइंडिंग दिया ये है। लिखा है, ये हमारा केस है प्रतिवादी आपका विवाद- केस होने से क्या? फाइंडिंग नहीं, दिखाई। इसी के आधार कभी केस जीत के भी अपील फाइल करना होता है। इसके बाद भी तो- कभी केस जीत के भी अपील फाइल अरे करना ठीक है, ये ये तो finding गलत है। ये इस बात पे इसी को कोर्ट ने विचार करके कहा कि आपका एक्स पार्टी डिग्री जो है, आपका हमारा एक्स पार्टी डिग्री जो भी है, जो भी हमारा बंटवारा नामा से जो प्रॉपर्टी हमें मिली
उसका उस प्रॉपर्टी पर इनका सेल डीड का असर नहीं। ठीक है, ठीक। आपको बंटवारा नामा से प्रॉपर्टी मिली है, आप अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करिए। हम सिर्फ हमारा सिर्फ इतना ही कंसर्न है, हमारा सिर्फ इतना ही कंसर्न है कि जिस प्रॉपर्टी में हम काबिज हैं, जिनको हमने माने हमारी वाइफ को लिखा बंटवारा नामा के तौर पर, उस प्रॉपर्टी पे इविक्शन इनके इस डिग्री के आधार पर नहीं। हम सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही डिसाइड करेंगे। हाँ, बाकी कोई ये तो सारा नहीं। ऑब्जेक्शन आप अपने एग्जीक्यूशन में लीजिएगा। नहीं, इस कि विषय there now there are two decrees. Now there are two decrees. उसके बाद वहाँ पर होगा फीडर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट। फीडर कमिश्नर जाके अपना रिपोर्ट देंगे कि आप किस प्रॉपर्टी में हैं और ये किस प्रॉपर्टी में और इनका क्या क्लेम है। हमारा And then it will be हमारा decided. सिर्फ कंसर्न इतना ही है। आपका कंसर्न इतना ही है, लेकिन आप गलत जगह पे इस कंसर्न को रेज कर रहे नहीं, लेकिन एग्जिबिट बी एंड सी तो हम अपना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए हैं। हैं। बना है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसी पॉइंट पर ही बना है कि ये सब्सटेंशियल कोर्ट ने इस बात को सही से समझा कि नहीं समझा। दैट्स ऑल, यही तो है, और तो कुछ नहीं है। वो तो हम लोग पढ़ ही लिए एग्जिबिट बी एंड सी और फाइंडिंग भी पढ़ ली, बस उसको ट्रांसलेट करके रिपोर्ट कर देंगे। एग्जिबिट बी एंड सी का जो इसमें जो बना है, एग्जिबिट बी एंड सी में का जो फाइंडिंग है उसको हाँ। ट्रांसलेट करेंगे, उसको कोट कर देंगे, वो क्या बात कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम खाली इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो डिग्री जो है, हमारा जो डिग्री है जो एग्जिबिट बी एंड सी के बुनियाद पर, उस पर इनको कोई इविक्शन का राइट बाय वर्च्यू ऑफ इविक्शन सूट नहीं। बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं। इतना भी अगर जैसे अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो ये डिग्री अगर इनके पास अगर है भी, तो ये अगर इस सर्कमवेंट करने के लिए डिग्री है, इट इज बस बेस्ट ऑफ द पेपर। There is no question of any conflicting decree. बात ये you are in possession by virtue of your own decree. They are entitled to evict you over the premises by virtue of their own decree. The provided the property, अगर मान लीजिए ये property description पर मान लीजिए कोई on the spot जाता है, right? होता तो हुजूर Eviction में I suppose let us assume for a moment. There is a decree in connection with house number 1, and on the spot, the person is found to be in possession of house number 2. Can he be evicted? Can he be evicted? कानून में तो नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिस में हो रहा है। गलत हो रहा है ना। और उसके बाद उतना नहीं है। हम लोग यहाँ किस लिए बैठे और आप लोग क्या करते नहीं, हम लोग तो आके हुजूर को बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, बहुत सा ऐसा मेरा केस है। आप तो हमको एक आपका कोई मेंशनिंग हमें डिसअलाउ किया आज तक? हमारा इस कोर्ट में नहीं है, लेकिन एक सिमिलर मैटर हुजूर देवघर साइड का केस था, उस पे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। हमने उसके बाद उसको स्पेशल प्रोसीडिंग में भी लाया। स्पेशल प्रोसीडिंग में लाने के बाद सेकंड अपील भी डिसमिस हो गई, फर्स्ट अपील भी डिसमिस हो गई। अब सेकंड अपील को बहुत मुश्किल से हम एडमिट कराए। ठीक है, मेरे पास तो आप मेंशन नहीं किया तो कर दो। हम तो अभी सोचेंगे मेंशन आएगा सर दो एवरीथिंग एडमिट किया। इस तरह के केसेस में इस तरह के केसेस में इतना हैश में होते हैं स्कूटी को, खास करके जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की कि विद इन 6 मंथ्स आपको हटा ही देना है। उस जजमेंट ऑब्जेक्शन भी तो ढंग से फाइल करेंगे ना। वो ऑब्जेक्शन तो क्या ही ऑब्जेक्शन फाइल सब तो हजूर एकदम नाम का ऑब्जेक्शन है। अब आई एम टेकिंग द प्रैक्टिकल रियलिटीज बता रहे हैं। और एक बार डिग्री अगर डिलीवरी ऑफ पोजीशन जहां इशू करेंगे, उसके बाद इसमें सीधे हटा देंगे और कुछ नहीं। वो ये भी नहीं देखेंगे कि हाँ इसमें मेरी बाउंड्री क्या है, उनकी बाउंड्री। हम खाली इतना ही प्रोटेक्शन चाहते हैं कि हमें मेरा जिस प्रॉपर्टी पर हम काबिज है। अच्छा, पहले ये जो फर्स्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है पैरा सी से रिलेटेड, हाँ। इसका तो इविक्शन सूट में कोई रेलेवेंस नहीं। एटलीस्ट यू शुड एग्री टू दैट। इसका क्या रेलेवेंस है? एग्रीमेंट का पैसा उसका सेल डीड में कोई आपने सेल डीड चैलेंज किया है क्या? नहीं है ना। नहीं, हमला एक पॉइंट भाई, if there is no mention of the previous money in the registered sale deed, तो फिर आप सेल डीड को null and void डिक्लेयर करवाइए। नेचर ऑफ लीडिंग ऐसा है कि एग्रीमेंट को हमने कहा है कि मैन्युफैक्चर्ड, इससे क्या लेना देना? There is a registered sale deed। रजिस्टर्ड सेल डीड। तो फिर ये जो फर्स्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है इन अ सूट और बिटवीन लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, इस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या रेलेवेंस है आपको बताइए? इसका रेलेवेंस ये है कि इनका क्लेम है कि ये इस प्रॉपर्टी को बाय वर्च्यू ऑफ सेल डीड खरीदे हैं, जिसमें इनका कहना था कि हम 17,000 रुपया एग्रीमेंट के समय ही दे चुके थे और 3,000 रुपया बाकी था, बाद में ये एग्रीमेंट हो गया। किसको?
टेक्नी दे टेक्निक देवी। हमारा कहना था कि टेक्निक देवी के साथ जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है वो एक मैन्युफैक्चर्ड एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। और जब 17,000 आप दे ही चुके तो फिर 3,000 रुपया उस दिन आपने नहीं दिया, ये सब भी पॉइंट आया। नहीं तो डिड्यूस आप बीइंग अ डिफेंडेंट राइट you basically you are saying that the consideration was not paid. यही बोल रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेलिट जो ये कराए, सेलिट ये जो कराए, ये सेलिट का वजूद ही नहीं। इसका क्या मतलब है? नल एंड वॉइड है। इनके सूट में जो है आप इनका सेलिट नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा कि आपको अलग से सूट फाइल करना है। ये कहने का, लेकिन इनका फर्स्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन। हाँ तो वही हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में हम जानना चाहते हैं। अगर इसको हम आपके फेवर में भी डिसाइड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेट मी एज्यूम नहीं लिखा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क ये पड़ सकता है कि अगर इनका सेलिट क्वेश्चनेबल हो जाए। कैसे हो जाएगा? इसलिए कि एग्रीमेंट का कोई डिटेल्स भी उसमें नहीं है। एग्रीमेंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है जब सेलिट हो गया। एग्रीमेंट लूजेस इट्स रेलेवेंस। ये सवाल उठ रहे हैं जैसे, तो ये सवाल उठा है, इसका जवाब तो हजूर को इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन नहीं लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं बिकॉज़ ही विल आई पुट इट दैट इज इट हैज गॉट नो रेलेवेंस वंस द सेलिट हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड। एग्रीमेंट में कितना पैसा था, सेलिट में इसका रेलेवेंस टू दैट एक्सटेंट ही है क्योंकि इसका नेचर फ्रॉडुलेंट नेचर है, टू दैट एक्सटेंट इसका। बट दिस सेलिट इज नॉट अंडर चैलेंज। Seldit, how can a Seldit be challenged? By the defendant. By different person, he is correct. Technically they will not challenging. Sir is correct. इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि Seldit देवी को इन्होंने पार्टी भी नहीं बनाया। जिस वाली नेसेसरी पार्टी, वो पॉइंट भी हमने उसमें उठाया था पहला वाला। तो वो भी नहीं बनाया। अच्छा चमेली देवी को भी पार्टी नहीं, जो मेन जिसको टेनेंट बनाया था उसको बनाया नहीं। तो जिसको टेनेंट बनाया इन्होंने, जो वो तो वो एक्चुअल में चमेली देवी का घर है। हम तो हस्बैंड है उसका, एज ए हस्बैंड के तौर पर हम तो चमेली देवी से ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए, इसमें क्या है? चमेली देवी को इन्होंने पार्टी बनाई, बस शी हैज बीन एग्जीक्यूशन में आपको हम सिखाएंगे थोड़ी। हम यहाँ आपको कोई ट्रेनिंग देने के लिए थोड़ी। इसमें हजूर खाली हमको उतना ही प्रोटेक्शन, बाकी हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर हमको उतना भी प्रोटेक्शन हो जाता तो एटलीस्ट आई एम प्रोटेक्टेड कि हमारा जो डिग्री है, कम से कम जो डिग्री से हम प्रोटेक्टेड हैं। तो इनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो इनका डिग्री है वो इनका डिग्री है। हमारा डिग्री यहाँ से लिबर्टी लेके वहाँ ये सब नहीं। हमारा तो फाइंडिंग है, आपका सबमिशन लिखा दे। हमारा जो डिग्री है, आपका सबमिशन हमारा डिग्री के बुनियाद पर ऐसा नहीं कि जो डिग्री, इसीलिए तो उसका बाउंड्री लिखा है ये डिग्री और यही नहीं, बजरंग राम अपने डिपोजिशन में एडमिट करते हैं कि इस एविक्शन सूट में जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में कोई केस कभी नहीं हुआ। व्हाट टू स्पीक अबाउट अदर थिंग्स। हम इसमें खाली इतना ही कर रहे थे। अब हम नहीं उतना पास करते हैं। एविक्शन सूट है, इस सर को सब पता है। हम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई कैन नॉट रेजिंग मच ऑब्जेक्शन। इतना ही कर रहा था। और रिलेशनशिप पे मतलब दोनों कोर्ट का कंकरेंट फाइंडिंग है उसी पेज नंबर 9 में, दैट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड बाय माय लर्नड सीनियर फ्रेंड by the first appellate court, and on the basis of both there is a concurrent finding of relationship of landlord and default in making payment of it. No argument has been made in this regard, and in view of the settled mandate of law that a concurrent finding of fact cannot be disturbed, my lord, this second appeal there is no substantial question of at all is applicable, and this second appeal is liable to be dismissed. चलिए, with respect to the counsel for the parties have advanced their arguments on the merits of the case by referring to the substantial question of law as mentioned in order dated 9/10/2014, which are as follows. By referring to the first substantial question of law, the learned counsel for the appellant has submitted that in the sale deed there is no disclosure about the earlier agreement of sale within bracket exhibit 4 by A,
by which the plaintiff claimed that the agreement of sale was entered and an amount of rupees 17,000 was paid at the time of agreement. The learned counsel submits that under such circumstances, the sale deed dated 14/3/1995 itself is invalid in the eyes of law, as the sale consideration has not been mentioned in the sale deed. Correct? And therefore, the plaintiff could not claim to be the landlord with respect to the suit property on the basis of the sale deed. Within bracket Exhibit 4. While responding to the aforesaid question of the aforesaid submissions, the learned counsel for the respondent has submitted that the sale deed dated 14/3/1995 has not been challenged, nor it can be has not been challenged by filing any cross appeal by cross objection. Yes, counsel. My counter claim in the suit manner. Sorry. In the counter claim in the suit. By not filing any counter claim in the suit, and the sale deed having been executed by Mausamar Techni Devi cannot be challenged by referring to the agreement of sale which preceded the sale deed. The learned counsel submits that there are concurrent findings by both the courts that there was landlord-tenant relationship between the parties, and there is also a finding that the defendant was the defaulter in the matter of payment of rent. Therefore, the first substantial question of law has no bearing in the matter. यही आपका कहना? फाइंडिंग में कुछ है? कोई रिलेशनशिप है? Techni Devi has not challenged land allegorical. Techni Devi never challenged the registered sale deed executed by her in favor of the original property. The learned counsel has also submitted that Techni Devi never challenged the sale deed executed by her in favor of the plaintiff. Appellate court का finding. Paragraph 15 से The learned counsel has referred to the, after hearing the learned counsel for the parties on the first substantial question of law, this court finds that admittedly the sale deed executed by Techni Devi in favor of the plaintiff was never challenged by
Techni Devi. The learned first appellate court has taken note of this aspect of the matter and has recorded in internal page 7 of the judgment that Mosama Techni Devi never challenged the sale deed nor brought any suit for its cancellation on the ground that the plaintiff had taken undue advantage of her illness and illiteracy and got a sale deed registered in place of the pronote after giving some cash to her, as pleaded in paragraph 12 of the written statement by the defendant. The learned court has also considered that the learned court has held that the plea of the defendant, as raised in para 12 of the written statements to disprove this court is of the considered view that the finding of the learned first appellate court in this connection is quoted as under internal page 7 का quotation मिल रहा है. This court finds that admittedly the suit was filed seeking eviction under the special act, that is Bihar Building Lease Control and Eviction Act 1882. And the plaintiff claimed title over the property by virtue of a registered sale deed number 2152 dated 2/5/1995 given back to Exhibit 4. The defendant did not file any cross objection. Further, the execution of the sale deed was not in dispute, but the defendant raised a plea that the plaintiff took advantage of Mosama Techni Devi, of illness and illiteracy of Mosama Techni Devi, and got a sale deed registered. However, admittedly, Techni Devi never challenged the registered sale deed. This court is of the view that such plea has been rightly rejected by the learned first appellate court by discussion as quoted above. This court is of the view that in the facts and circumstances when Techni Devi never challenged the sale deed and even the defendant never challenged the sale deed,
by cross objection or by a separate suit. And merely because the recital in the same deed did not refer to the agreement of sale / payment of consideration at part consideration at the time of agreement of sale, the same has no bearing with respect to the legality and validity of the sale deed exhibit 4. In such circumstances, the first substantial question of law is answered against the appellant and in favor of the respondent. Second, may I? Second. Argue your second point. So far as the second point, your Lordship is concerned, my submission before your Lordship is that the exhibit B, which is the next party decree, from the result, it would appear that the cause of action for this particular suit, your Lordship, was threat of disposition by the plaintiff hearing. And By despite- Bajrang Ram, threat of disposition by Bajrang Ram. No, by plaintiff hearing. Plaintiff hearing. Yes. Bajrang Ram is the defendant. Bajrang Ram is the defendant by the plaintiff. By the plaintiff to the wife of the Bajrang Ram. When Marat Moswat taken by virtue of Bajrang, when the property that property was given to her, and because they do not have house, then somehow or other the plaintiff number one got executed the sale deed in her name. Thereafter, when she started threatening and there was a apprehension of disposition, then Chameli Devi, wife of the defendant number one, in whose favor the Mosmat Techni Devi had Given property by Bajrang Ram. she instituted suit, title suit number 37/1995. In the month of April, immediately after the discussion of the sale, wherein she arrayed Ranu Rani as one of the party and the Mosmat Techni also. But despite valid service of notice, the plaintiff number one did not appear, and that decree, your Lordship, no ex party, it was passed in the favor of the Chameli, wherein it was specifically mentioned that the boundary, your Lordship, is wrong. They have got executed with the wrong boundary, and Where is the finding that the boundary in the sale deed is wrong? Show me the finding. the finding I am not saying. That was our case. That's it. Finding portion, I am reading. मैं kindly similar exhibit you. अपना केस भी उस समय काम कर ही देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा। वाद पद के अनुसार वादनी का संक्षेप में कथन ये पेज 2 पर। मुनका बगीचा हजारीबाग शहर की निवासिनी है तथा प्रतिवादी संख्या इसकी सास है। वाद पद के अनुसूची में वर्णित संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की रहती जमीन थी जिसे उसने वर्ष 81 में बीटर पत्र द्वारा खरीदा। उसमें एक पक्का मकान तथा कुआं डिड बैलेट फाइट। और प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रेम के से वशीभूत होकर वादिनी के पति के पास कोई आवश्यक मकान नहीं होने के कारण एक बंटवारानामा लिख दिया और वादिनी को बंटवारानामा में आवंटित संपत्ति पर कब्जा दखल भी दे
वादिनी बंटवारा नामे में प्राप्त संपत्ति का रखनकार है जो वाद संपत्ति की सूची ए में अंकित है। प्रतिवादिनी नंबर 1 बीमार पड़ गई और उसकी बीमारी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती रानू रानी उसने रजिस्ट्री कार्यालय में 14/3/95 को ले आई और वाद संपत्ति का विक्रय पत्र में लिखवा लिया। उसमें विक्रय पत्र में चौहदी का भी गलत वर्णन कर दिया। विक्रय पत्र दिनांक 14/3/85 से निष्प्रभावी और उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को कोई अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद संपत्ति को बंटवारा में आवेदन करके वादिनी को दिनांक 1/3/2025 को दे दिया। वादिनी संख्या 2 द्वारा 2.5 डिसमिल जमीन का विक्रय पत्र लिखवा लेने के आधार पर वादिनी को बेदखल किए जाने की धमकी दी जाने पर वाद का कारण उत्पन्न हुआ और वादिनी के वर्तमान वाद दाखिल किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवाद का दाखिल नहीं किया गया है। इस मामले में प्रतिवादी वर्ग के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई सुनवाई प्रारंभ की गई है। वादिनी की ओर से मामले में कुल 3 साक्षी परिचित हुए हैं। वादिनी संख्या 1 दीपक कुमार सिन्हा, वादिनी संख्या 2 चमेली देवी मोची है। परिलेखीय साक्ष्य के रूप में वादिनी की ओर से बंटवारानामा विलेख 2 विक्रय पत्र दाखिल किया गया। बंटवारानामा विलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटरी एसएन तैयार के समक्ष दिनांक मार्च 95 को बंटवारा विलेख को प्रनिष्ठित कराया गया था। इस विलेख द्वारा वादिनी चमेली देवी को प्रतिवादी देवी ने 2.5 डिसमिल जमीन जिसमें एक पक्का मकान एवं कुआं स्थित है हिस्से के रूप में आवंटित करके सकल कब्जा दे दिया। बंटवारानामा विलेख में उल्लेखित शर्तों के अनुसार चमेली देवी को दिए गए संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये प्रदर्शित करते हुए उसे दाखिल खारिज करवाने का अधिकार भी दे दिया और टेकनी देवी ने अपने खर्चा के जीवन यापन के लिए 2.5 डिसमिल जमीन या मकान को रख लिया। यह भी इसमें आया है, अपने लिए व्यू रख लिया। प्रदर्श 2/1 विक्रय पत्र की प्रामाणिक प्रतिलिपि है जिसके द्वारा टेकनी देवी ने श्रीमती रानू रानी को 2.5 डिसमिल जमीन का विक्रय किया। इस विक्रय पत्र द्वारा टेकनी देवी ने किसी भी खपड़ापोश मकान का विक्रय दिनांक 50/14/3/95 को किया। इस विक्रय पत्र एवं बंटवारानामा में अंकित प्लॉट संख्या 379 है तथा दोनों ही विलेखों में 2.5 डिसमिल जमीन का अंतरण किया गया है। बंटवारानामा विलेख में पक्का मकान एवं कुआं वादिनी को दिया गया है, परंतु विक्रय विलेख द्वारा खपड़ापोश मकान को बेच दिया गया। दोनों विलेखों में 2.5 डिसमिल की चौहदी अलग अलग प्रदर्शित किया गया। विक्रय विलेख के साथ एक नक्शा भी तलब है जिसमें प्लॉट संख्या 379 का क्षेत्रफल बहुत बड़ा प्रदर्शित किया गया है तथा उसके एक कोने में 2.5 डिसमिल क्षेत्र को बेचा जाना प्रदर्शित किया गया। प्रदर्श 2 विक्रय पत्र की प्रामाणिक प्रतिलिपि है जिसके द्वारा टेकनी देवी 2.5 डिसमिल जमीन प्लॉट 379 का राजो देवी से 1500 रुपये में खरीदा था। बंटवारानामा विलेख प्रदर्श 1 पर सिद्ध किया। चमेली देवी ने अपने साक्ष्य में बंटवारानामा में मिली संपत्ति पर अपना कब्जा दखल स्थापित किया। निबंधक कार्यालय के सहायक हैं जिन्होंने प्रदर्श 2/1 प्रमाणित प्रतिलिपि घोषित किया। विलेख पर उपलब्ध वादिनी के साक्ष्य को ठुकराने का विश्वसनीय मानने का कोई आधार मेरे समक्ष नहीं तथा वादिनी का वाद इस सीमा तक डिक्री किए जाने योग्य प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र से वादिनी के स्वत्व एवं दखल वाले मकान एवं जमीन में प्रतिवादी संख्या 2 को अधिकार एवं स्वत्व प्राप्त नहीं। ये हमारा इतना ही सिर्फ कहना है कि इस डिग्री के आधार पर जो और उसका जो कॉज ऑफ एक्शन था वो शेडेड था और उसका डिस्पोजिशन ही कॉज ऑफ एक्शन था। तो जब हम सूट में गए threat of disposition not disposition not threat of disposition, तो जब हम सूट में गए तो कोर्ट ने इस बात को समझा, उनको नोटिस भी किया, ये पूरा रिकॉर्ड भी उसका है। तो ये अपेयर नहीं हुए और अपेयर नहीं हुए उसके बाद कोर्ट ने इस बात को कहा कि जिस प्रॉपर्टी पर बंटवारानामा से जो इसको मिला है चमेली देवी को, जिसमें कि डिफेंडेंट नंबर 1 हस्बैंड के तौर पर
साथ रहते हैं, उसमें इनको कोई अधिकार वगैरह प्राप्त नहीं। परिणामतः वादनी का वाद एक पक्षीय रूप में बिना व्यय के साथ किया जाता है। यह उद्घोषित किया जाता है कि वादनी प्रतिवादिनी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेय दिनांक 14/3/95 द्वारा वादनी के हर हिस्से में आवंटित 2.5 डिसमिल जमीन जिसमें पक्का मकान एवं कुआं स्थित है में प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त है। इन्होंने कपड़ा पोस्ट मकान खरीदा जो कि इनके सेल्डेड में लिखा। इनको ने कहा है कि हम इसको रिमॉडल किए, रिमॉडल का भी कोई इसमें वैसा एविडेंस नहीं है। और हमको ये कह करके ये सूट ले आए कि हम इसमें रह रहे हैं, तो हमारे साथ ही 50 रुपया पर हमारा किराएदार थे, ओरल टेनेंसी है, ओरल टेनेंसी का केस ले आए, इसमें कोई रेंट रिसीट वगैरह कुछ भी नहीं है। और कोर्ट इस बीच इसको दोनों कोर्ट ने मान लिया और इनको डिग्री दी। हमारा सिर्फ इसमें हम उसको इतना ही इसमें कहना है कि जो एक्स पार्टी डिग्री है बहुत क्लियर है कि उससे इनका जो कि शेड्यूल जो है इससे हमारा राइट है। अगर इनके पास अगर कोई शेड्यूल है ऐसा जिसे जिसका ये डिग्री कराना चाहते हैं, स्पेशल कराना चाहते हैं, करा लो। और अगर दोनों प्रॉपर्टी एक है तो हमारा इस डिग्री से चलते प्रोटेक्शन होगा। रह गया जैसे इस चीज को स्पेशल स्टेज पे या किसी भी स्टेज पर अगर ये सवाल उठेगा तो यह सवाल को तो इसको एड्रेस करना, क्योंकि अगर इस जो हाईकोर्ट का डिग्री से या जो अपीलेट कोर्ट या फर्स्ट का डिग्री इनके पक्ष में है, इसके आधार पर हमारा दूसरा डिग्री कोई नहीं इंटरफेयर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हुजूर फ्रेम है। ये सिर्फ अपीलेट कोर्ट सिर्फ बाउंड्री कंपैरिजन करके कहती है। बाउंड्री कंपैरिजन का एक इशू है, लेकिन बाकी चीज भी तो है। 14/2/2096 का डिग्री है। सेल्डेड इनका नल एंड वॉइड तो नहीं डिक्लेयर किया ना? सेल्डेड आपके प्रीवियस सूट उसको उन्होंने नहीं किया, लेकिन इतना तो कहा, हमें तो प्रोटेक्शन तो दिया। ठीक, उतना प्रोटेक्शन आपके पास है ही, बस उतना ही प्रोटेक्शन हमें चाहिए। अगर उतना भी प्रोटेक्शन हमें My lord, my submission is, my lord, both the courts, my lord, learned trial court as well as the learned first appellate court has came to a definite finding that boundary of earlier suit and the boundary of the suit is different. Sended is different. So I was not aggrieved with this. There was no decree against me with respect to the sended and with respect to the suit property. Not only this, my lord, the learned first appellate court has also taken a note that Masumar technique in paragraph in evidence Bajrang Ram and Chameli Devi both are different. Bajrang Ram has specifically stated that uski mother Techni Devi jinda hai. If my lord will see the finding of the first appellate court, my lord, internal page 6, सबसे lowest line, internal page 6 of the learned first appellate court. Now the best witness to approve or deny the existence so and so is now, but she has not been produced and examined, rather purposely withheld by appellant, while appellant has admitted that in para 10 of his cross examination that his mother is still alive. So there is proper consideration by both the courts below, my lord, and apart from पेज नंबर 7 से जो कोट करेंगे ना जी, उसके अलावा ये पेज नंबर 6 से भी ये पोर्शन को कोट करना है। There is a finding that the properties are different. You showed yes. Description of suit properties. Yes, page number 8, madam. Yes. Page number 8. Yes. So you have no concern with the property of Batwara now? No. We are concerned with the suit property. Suit And decree has been decree can be only executed for the suit property. That's And now they cannot be given any aid to take any undue advantage. No, we will not. We Yeah, will only the- answer the the- substantial my question. lord, greatly. There is a clear the- finding that the identity of the property are different. different. That should be sufficient. Yes. That should be sufficient Yes, even for yes. you. Yes. With respect to the second substantial question of law, the learned counsel for the one appeal protection action. I would like to, only one protection I would like, that by virtue of this degree,
which is only with ऐसा respect to प्रोटेक्शन suit नहीं property. देंगे सर आपका इतना कहना काफी है कि that courts have given finding that the boundary of these two properties are distinct. Yes. Simple. They have given a finding to that effect. Yes. They have given a finding to that. What is likely to execute decree delivery of possession? But he is not at all bothered. क्या चाहते हैं? डिक्री अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो 96 का सूट। bothered नहीं, क्या चाहते हैं? तो आपने appropriate objection नहीं फाइल किया होगा ना? अभी तक नहीं किया तो चमेली मत में कर करिए देते। आप वहाँ कुछ मत करिए, ऑब्जेक्शन भी मत करिए। उसके बाद बोलिएगा डिक्री एग्जीक्यूटिव ने नहीं किया ना ऑब्जेक्शन, नहीं किया बस। With respect to second substantial question of law, the learned counsel has fully placed exhibit B and C and has submitted that in title suit number 37 of 1995, wherein the judgment was passed by exhibit B, it clearly reveals that the specific case of the plaintiff in that suit, namely Chameli Devi, wife of Bajrang Ram, was that the property was, the suit property in the same case with specific boundary was given to her in Batwara Nama by her mother-in-law, namely Mosmat Tepni Devi, and the area of the property was 2.5 decimal. The description of the property in the said suit has already been quoted above. He submits that it was asserted in the said case that the boundary, that the boundary was wrongly mentioned in the registered sale deed dated 14/3/1995. And it was also mentioned that the defendant number 2, namely Ramu Rani, had taken advantage, undue advantage of illness of Tekni Devi and got the registered sale deed executed on 14/3/1995. The learned counsel submits that in spite of notice, service of notice, neither Tekni Devi nor Ramu Rani appeared in the suit, and ultimately the suit was decreed in favor of Chameli Devi. The learned counsel has submitted that Exhibit C is the decree arising out of the said title suit. He submits that the aforesaid aspect of the matter has not been properly considered by the court while decreeing the eviction suit. And therefore, the learned courts have misconstrued Exhibit B and C while passing the judgment. The learned counsel appearing on behalf of the respondent has opposed the prayer and has submitted that in the earlier title suit, the sale deed dated 14/3/1995 was not declared to be null and void. Rather,
the decree was passed only to the extent that the property sold by dependent number 1 in favor of dependent number 2 will not affect the right of Chameli Devi in connection with the suit property mentioned there. The learned counsel has submitted that. In the earlier suit, towards the east, the house of Techni Devi was shown. He has further submitted that in the present case, the learned court has taken into consideration that the boundary mentioned in the earlier suit is different from the boundary mentioned in the present suit. And in the present case, 2.5 decimal of land was sold, and 2.5 decimal having Khapra Post house was sold in favor of the plaintiff by virtue of the registered sale deed dated 14/3/1995. He submits that since the identity of the property involved in the earlier title suit is different from the identity of the property involved in the present case, therefore, there has been no misconstruction of exhibit B and C by the learned courts. The learned counsel has referred to the findings of the learned first appellate court in internal page 8, which is quoted as under. After hearing the learned counsel for the parties in connection with the second substantial question of law, this court finds that in the earlier title suit, bearing title suit number 37 of 1995, the sale deed dated 14/3/1995 was not declared null and void. Rather, there was specific finding that the sale deed would not affect the claim of Chameli Devi with respect to the property acquired by her through Batwaranama. This court also finds that the boundary of the property which has been mentioned in the present case matches exactly with the boundary of the property mentioned in the sale deed, and the boundary of the property mentioned in the earlier title suit is different from the boundary mentioned herein. It is also apparent that in the boundary of the property mentioned in the earlier title suit, towards the east, house of Techni Devi was mentioned. And it is the specific case of the plaintiff that the plaintiff had purchased the property by virtue of registered sale deed, a Khapra Post house which belonged to Techni Devi. This court finds that the learned first appellate court has taken note of these aspects of the matter and has clearly recorded a finding that the property acquired by Chameli Devi through Batwaranama is different from the property involved in sale deed dated 14/3/1995. In view of the aforesaid facts and circumstances, this court is of the view that
The learned first appellate court has not erred in construing exhibit B and C by holding that the defendant, that the plaintiff, while holding that the respondents did not acquire any while holding that they did not misconstrue exhibit B and C by coming to the findings recorded therein. Accordingly, the second substantial question of law is also answered against the appellant and in favor of the respondent. In view of the aforesaid findings, there is no merit in the second appeal, which is hereby dismissed. Deeply. One comment I have replied. It is Samim Akhtar versus Iqbal Ahmed. किस लिए? सब पूरा आर्गुमेंट खत्म हो गया, इतना 1.5 घंटा से ऐसे देने से क्या? पहले दे दिया था। ऐसे आप तो प्लेस भी नहीं किए ना कि ये जजमेंट है, इसका ये पैराग्राफ है। दिया था तो अब दिया तो बहुत चीज रहता है मिस्टर शर्मा, इससे नहीं करिए पूरा जजमेंट हम एक सिर्फ हम इतना ही कहना इसमें चाहते हैं कि टाइटल का इश्यूज है इसमें। तो क्या करें, टाइटल का इश्यूज है टाइटल जो आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनवाया है उसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। टाइटल का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आप ही ने बनाया है ना, आपका अपील है। टाइटल का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आप ही ने बनाया है। टेक्निकली तो इनिशियल सूट में टाइटल का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनने का क्या प्रश्न नहीं बना, इसलिए भी कह रहे थे कि वो पॉइंट था नहीं हमने तो कहा नहीं यार नो चलिए आई एम ग्रेटफुल। From supplementary list for orders petition item 4, first appeal filing number 11996 of 2024. Earlier, in another case, it was held that the suit appeal is continuation of the suit, and so the court fee will be assessed on the basis of the earlier enactment, not by amendment. Here, what happened? The suit was filed. The suit was filed on 8/9/2022. And the Amendment Act came in 2023. डेट बताइए। This act came into effect November 23rd, 2023. Yes. Before the trial court, the plaintiff, who is apparent before this honorable court, has paid more than the amount which was required to be paid, and paid 89,000 and odd. Although at that relevant time, the maximum court fee was only 50,000. And now the stamp report of this honorable court has pointed out
the plaintiff applicant have paid the fee at rupees 1,39,610. Which is incorrect now. So the maximum court fee that was to be paid is rupees 50,000. You see, you have paid the court fees, right, before the learned trial court. In the first appellate court, that could be a point for determination. What would be the court fees, whether you will be entitled to any refund or not. But so far as this defect is concerned, you have to pay the court fees. Entire. Yes, entire. Because we do not know. You see, we will see the records, what was the relief, what was the nature of adjudication, and then if ultimately it is found that only 50,000 court fees is payable, not only before this court but also before the learned trial court, we pass an appropriate order. But as of now, you cannot Then escape. even before this honorable court, I had paid rupees 89,000 an hour before the trial court. Now Even before this court, you pay the same amount of court fees. We will not ignore this defect. so here the demand is for payment of rupees 1,39,000 an hour. Before the trial court, how much court fees did you pay? 89,000 an hour. 89,510. And why this calculation has been made? So this calculation is wrong, therefore I will give this. On what a report may be called for from this down report, how it is calculated. So let's simply look into the decree under appeal. Decree under appeal at last page of the brief. Stand for complaint 89,510. The learned counsel for the appellant has submitted that the suit was instituted on 8/9/2022. And at that point of time, the maximum court fees payable was rupees 50,000. He submits that before the learned trial court, the court fees of rupees 89,510 was paid. By mistake. It is my bona fide mistake. On the basis of the court fees within bracket Jharkhand Amendment Bracket Rules Act 2022. Although the court fees was payable with respect to the court fees which was payable was referable to the date of institution of suit. He submits that before this court, the stamp reporter has pointed out deficit court fees of rupees 1,39,610. And he is unable to figure out as to how such an amount has been calculated. The office is directed to call for a report from the stamp reporter
from the concerned stamp reporter as to how and on what basis the deficit court fees of rupees 1,39,610 has been demanded. Post on 19. Item 5, second appeal filing number 13075/2024. For the purposes of court fees, the learned counsel for the applicant is directed to act the state of Jharkhand as a party in the present proceedings. Let the copy of the counsel for the applicant is directed to serve a copy of the entire records of this case in the office of the Advocate General and file a receipt there. If so advised, the state of Jharkhand may file a counter application to the interlocutory application filed in this case. So I will make party in the main. Only for this main case में only for court fees. Court fees में state का involvement हो जाता है. Yes, yes. It is That has between to the litigant and the state. Yes. Substitution petition में जो respondent number Right. tenant number 4 में जो When did you उसी पे वकालतनामा has been filed. when did he die? Died में जो died lecture 1 Annexure 1. to Date पूछ रहे हैं तो Annexure 1 या कौन सा? 22 में डेट को दिया है. Died on 20/11/2022. Wakalatnama on the yes, legal representatives have been filed. Supplementary affidavit has been also been filed in this IA by mentioning the address and Why supplementary affidavit has been? because of paragraph 10 में वो छूट गया था उसका पूरा एड्रेस का भी सबका देकर के फाइल किए फिर वकालतनामा फाइल किया. What is the reason for delay in filing the substitution petition? Reason for delay. वो remote You filed your, just a moment. You filed your appeal when? I my appeal by the 10/12/24. And and then at the time of filing the appeal, you have made appeal number 4 party. Correct? thereafter he deleted and my substitution petition. So at the time of why is it so? Because we are living in a remote village area. What remote village area? Remote village area में मरने जीने का कहानी अलग होता है क्या? पता है नहीं इसको पता नहीं चला. क्या नाम है अपील नंबर 4 का? किस्टो कातर एलियस किस्टो मोहन कातर. और वकालतनामा में किस्टो का इनका भी नाम है. उसको डिलीट कर दिया. नहीं कर सकते ना डिलीट. किस्टो कातर के नाम से. हाँ, वकालतनामा में ये भी है अपील नंबर 4. बताइए तो आप बताएंगे ना. वेरिफिकेशन करिए वेरिफिकेशन. वेरीफाई करें. ये सब्स्टिट्यूशन हम अलाउ नहीं करेंगे. वेरीफाई करें. इसको टाइम दे दिए वेरीफाई. कोई टाइम नहीं देंगे, आप अभी वेरीफाई करिए. टाइम क्या देंगे? वेरीफाई राइट नाउ.
Item 6, second appeal, file number 2672 of इस केस में कर 2025. दीजिए पोस्ट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, आराम से देख लीजिए आप, नेक्स्ट ट्यूसडे को रख दीजिए। Logic 2 weeks time will be valid to file ideas of education. For defect number 154, it would be removed during the course of the day. And for defect number 182, it may kindly be removed. Have you filed certified copy of the degree? Yes, yes, at page number 4. Degree. Where is the certified copy of it? Because on the last date you made a statement that the degree has not been prepared. The court says that the degree has been prepared and they have annexed a photocopy of the degree. This is first appeal. Second. As per the report, the appellate decree has been prepared. Which is dated 26/11/2024. Counsel for the appellant is granted time till 27th of January 2026 to file the certified copy of the appellate court's decree print. If this order is complied, post this case on 28th of January. I see. I verify. अब आपका The चार्ज person the appellate number का नाम इस पर सिग्नेचर नहीं, वो हम अपने से लिखे थे तो उनको पूछे हम, अपने से लिखे थे का इसका क्या वो बीच में जो रहता है ना पार्ट, वो appellate वार्ड को और वो जो साइड में बता साइन में जो साइन है ना वो उसका नहीं है, तो किसका है नहीं, काटा हुआ है, काटा उसका नहीं, उसका है, वो काटा हुआ किसका है, वो उसका नहीं है, किस्टों का नहीं है, किस्टों का कहीं वो हम का ये बीच में जो रहता है ना पार्ट में वकालतनामा का, वो उन लोगों का एड्रेस हम लोग अपने से भरते हैं, दूसरी जी से हम लोग अपने भर देते हैं,
तब हम पूछे उससे कि स्पॉन्डेंट नंबर 4 का आप कहाँ निशान लिया है, तो तब हमको बताया हम सब वन में है कलेवर पाकर, वन में कलेवर तो ये पाकर। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा इसलिए लॉर्डशिप की फोर जो है फोर डाइट When? in the year 2022 and वकालत हम हैंडल कर दिया। हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ कैसे होगा और क्यों हम सब्स्टिट्यूशन करें? आप ही अपीलेंट थे। You did not take any steps for substitution. कल तो लॉर्डशिप एक्ट 9 नंबर सीरियल नंबर 9 में था तो इफेक्ट को रिमूव कर दिया था इसी तरह। किस तरह और से? ऐसे ही सेम टाइप का केस था मेरा ही जैसे। गलती से कर दिया। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपीलेंट हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मत फाइल करिए, उसके बाद यहाँ पर आके आप सब्स्टिट्यूशन फाइल करिए। नहीं, हम परमिशन नहीं देंगे। तो हमको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेके आइए ना जजमेंट। सर ऐसा हो सकता है को अपीलेंट नहीं, है, इसमें ये जस्ट आपसे नहीं पूछना ये सीधे से बस पूछिए ये क्योंकि provision आपको तो नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट चाहिए। चैप्टर 12 रूल हम 96 बात करें, वो झारखंड हाई कोर्ट रूल्स का। हम बात Being Sir. appellate, he has not taken the step of substitution. Yes, being an appellate has not taken the steps. Yes, in my view or supported by Supreme Court judgment, the judgment itself is a nullity and no second appeal is maintainable. सही है ना? मेरे विचार। हाँ, इसका जजमेंट हम तो जजमेंट दीजिए ना, यहाँ तो यही का कहानी है यहाँ पे। 2005 volume 6 SCC 2005 2005 वो copy हाँ but I'm finding one IU also on this not so this is 2005 volume 6 SCC A maximum period some court gives liberty to make it corrected. no by that is the trial. law. हाँ, वो उसमें That is 2005 volume 6 SCC page 5 6 SCC page 300 300 yes नोट 300 करिए इसको 2005 volume 6 SCC page 300 and you also see note 2004 volume 4 JCR 2004 volume 4 JCR page 700 Jharkhand and this is one second appeal version which I was the appellant wrote, second appeal 134 of 2019. in so many cases, order have been passed like. No, order have been passed by coordinate bench that since the judgment is passed against a dead person, either in favor of a dead person or against a dead person, it is a nullity and therefore second appeal is not maintainable and the liberty has been granted to approach the appellate court and the appellate court will open the decree and will after the proper application will proceed in accordance. This is settled by the Supreme Court. Yes. And this has been followed by the coordinate bench. also. कोर्ट 9 नंबर कोर्ट से सपोर्ट सर। तो इसके लिए भी तो नोटिस करना होगा, So, नोटिस तो करना होगा इसके लिए भी। तो अगर on record है कि prior to this because they are the appellants. हाँ, they are themselves Therefore, disclosing, therefore, Lords, they are themselves disclosing। yes, तो that is फिर भी इसको sufficient. सेटिसाइड करने के लिए भी तो नोटिस तो करना But इनका second appeal maintainable नहीं होगा. इनका सेकेंडरी मेंटेनेबल हाँ, maintainable नहीं होगा. The language is second appeal itself is not maintainable because the judgment is a nullity against a dead person and therefore notice का जरूरत नहीं होगा. तो जजमेंट विल बी सेटिसाइड, Sorry, नलिटी हो जाएगा। nullity होगा. Nullity. In view of Supreme Court तो judgment. ये जो रीओपन होगा जाकर सिविल कोर्ट में फिर Yes, से, हाँ, तो उसको फिर से नोटिस notice होगा. Notice. This is what. फिर वहाँ से नोटिस जाएगा हाँ, जब वही- ये ओपन होगा हाँ, तो वही बोल रहा हूँ. यहाँ वहाँ से notice तो है. यहाँ पर ये इस तरह से नलिटी डिक्लेयर करने के पहले Yes. should the respondents be not noticed? Not required, not because since once it comes to on record by the appellant or by not the process server that the judgment have been passed against a dead person and it is on record, then it comes to your lordship's knowledge. Then lords, this is what वो जरूर हाँ lords इसमें है. हमें कहिए भी उसी में फाइल कर रहे हैं lords. Your lordship received this judgment. Second इसी केस में फाइल करना है, नहीं इस केस में. वो पहला वाला केस में। नहीं पहला वाला नहीं. आप रेफरेंस के लिए दूसरा आइटम लगा हुआ है नीचे. वो सेकंड बिल होगा. हाँ वही वाला. रेस्पोंडेंट को सुन के ऑर्डर हुआ है, हाँ लो क्योंकि उसमें अपीयर किए हुए थे. बिना रेस्पोंडेंट को सुने हाँ नहीं। उसमें अपीयर किए हुए थे. अदरवाइज भी हमारा ये सोच है यस
क्योंकि रेस्पोंडेंट को सुन के इसलिए नहीं, बिना सुने इसलिए नहीं ऑर्डर करना चाहते। जब हम इसको रिमाइंड करेंगे, मतलब बोलेंगे कि नलिटी है एंड दे मे रीओपन, then under such circumstances I can just fix a date. Yes, The that. party should know. Yes. नहीं तो ये नोटिस सर्विस में ही इतना समय निकल जाएगा। This is for your lordship. Your lordship may issue notice on that IA. Only that. Okay, I am also filing notice on IA in the probably 2 or 3 cases down the list. इसमें स्टेट हैं, स्टेट आपके होते हैं, आप हैं स्टेट, डेप्यूटी कमिश्नर भी है इसमें। तो ये अपनी गलती का भी एडवांटेज ले सकते हैं क्या? But this is what Cannot. And this is not, one cannot take advantage. अपना गलती अपने ही नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, होने तो देखा जाएगा, सोचेंगे बाद में। What is this? Let the settled principle is, one cannot take advantage of his own law. किस तरह का ये? that is what coordinate bench has done that and was following Supreme Court judgment and this one more High Court judgment. Many cases order have been passed. Yes, in many cases, not this is correct. Several cases order. In several cases, this is the common order passed by Court number a one. coordinate bench. देखिए ऐसे फाइलिंग नंबर 13075 of 2025. The learned counsel for the appellant has submitted that Kisto Patra, who was initially made appellant number 4 in this appeal, but subsequently his name was deleted, had expired on date बताइए 2011-2022. 2011-2022. The death certificate has been placed on record in IA number 7664 of 2025. Seeking substitution the records reveal that Kisto Patro was one of the co-appellants before the learned first appellate court, and judgment was pronounced on 29 June 2024. Thus, apparently, the impugned judgment passed by the first appellate court included Kisto Patro, who had died during the pendency of the first appeal. लिखा है आपका the learned counsel for the appellant submits that on this ground alone the judgment passed by the first appellate court is a nullity. लिखा है कि नहीं लिखा है ना? तो जो जजमेंट है वो आशिक फॉलो तो करना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अकॉर्डिंग टू पास लिखा है ना ये? उसके बाद फिर हमको फिर बाहर रिमाइंड वो रीड चाहिए. The learned counsel has
relied upon order dated 21/6/2023 passed in essay number 134 of 2019 and has submitted that under such circumstances the appellate court's judgment be declared a nullity and the appellants be permitted to take steps before the first appellate court to reopen the decree and to have the legal representative of Christo Patro on record. Correct? The cause title reveals that Christo Patro's two full brothers, namely Mohan Patro and Gidhari Patro, were appellant number 3 and 5 before the first appellate court, who are appellant number 3 and 4 before this court. पातर की दाल पातर PATAR पूरा अवेट हो जाएगा सर, may not await completely. It may not await completely if the estate is substantially represented by the court co-appellants. State अगर represent हो रहा है तो हो रहा है. नहीं हो. If the decree can be said favorable notes, then definitely it will not await in total. But that will be not decided by the first appellate court. The word is used with nullity. Nullity. Okay. However, before passing any order in this case, in the line suggested by the learned counsel for the appellant, this court finds it proper to issue notice to the respondents. Issue notice to the respondents in RA number 7664 of 2025. 664 of 2025. स्टेट नहीं है यहाँ पर. To respond number 1 and 2. ठीक है? The counsel for the appellant is directed to serve copy of the memo of appeal as well as the interrogatory application in the office of the Advocate General, who shall represent the respondent number 3 in the present case. The needful will be done within 3 days from today. Serve कर दीजिए उनको. Sir, The notice to respond number 1 and 2 be issued through speed post, for which requisites be filed within a week. 10 एक days. हफ्ता में 10 days. 10 days क्यों चाहिए आपको? अगर कहीं गलती से भी देर हो गया तो एक दिन काहे देर हो जाएगा? होगा तो अच्छा, नहीं 10 days. होगा तो नहीं हम तो घर से 10 कोशिश days, नहीं ठीक है? आइए भी नोटिस करेंगे. Office to track speed post delivery post on 16th February. ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर भी देंगे और इसमें जितने भी जजमेंट से सब भी देंगे. हमको लगता है अबेटमेंट वाला एक जगह हम लोग किए थे साहब. एक ये खोज के निकाले हैं अभी 2025 का सुप्रीम कोर्ट है. 2025 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 1067 1067. इसमें यही है ना, पूरा अबेट नहीं करता है. इसमें लिखा है, इसमें तो ये है नलिटी के बारे में ही.
लेकिन your lordship is right in one judgment in 2019 or 20 I'll search it and give it to you. Yes. In which it also held that at times there may be circumstances where it would not get in totality. And your lordship, it was it is a दो case चीज है, that if the decree is favorable and if the estate is substantially represented. substantially represented over that is a landmark judgment of Supreme Court. That is, this is Amarjit Singh Kharla. This, if I am correct, that probably it was 5 judges bench. अमरजीत सिंह कालरा ना, Amarjit Singh Kharla. ये दोनों इसका citation दे देंगे हमको. हाँ, 2003 volume 3 SCC page 272. ये दो judgments. In this case, it was that substantially represented. This हमको word was नहीं तो फिर यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत है. या कोई भी रिमोटली भी किसी को पार्टी बना दीजिए और वो मर जाए तो पूरा कहानी खत्म है. there may be at times there would be a situation where the appellant files an appeal and the respondent dies. The respondent does not disclose about the जब death. अपीलेंट खुद मर जाता है नहीं तब तो बहुत सीरियस बात है ना. वो तो है. इतना नहीं नेगलिजेंस कैसे हो लेकिन सकता है? अगर respondent हाँ, किसी केस में लेकिन death हो here is a case where the appellant is dead. तब तो ये And you do not bring it to the notice of the court, allow the court to pass a judgment, and then you say that it's a nullity. नहीं लेकिन समझ नहीं आता. हाँ लेकिन there may be situation where the respondent also does not disclose and the appeal is allowed. Then can the entire judgment of लेकिन the responsibility तो जो मरा है उसी का है ना, उसी जो भी पार्टी है. और this severability of सगा भाई, you see the full brothers are on record. then They do not disclose. सेवरेबल नहीं, तो ये नहीं बोल सकता है कि knowledge नहीं है. नॉलेज नहीं हो तो और ये जो मतलब अगर मान लीजिए पूरा एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीइंग मान लीजिए कोई बोलता है कि वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द रिकॉर्डेड टेनेंट, तो एंटायर एस्टेट इज रिप्रेजेंटेड, द एंटायर लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड. अब एक भाई मर गया तो बाकी सब कहानी खत्म हो जाएगा. आपको नहीं समझ आता है. particularly when the matter is against a third party. कोई बात नहीं सर, आपके केस में एक बढ़िया जजमेंट लगेगी. कुछ तो होना चाहिए ना नया. 2003 SCC 272 एक जजमेंट है. 2025 लाइट लॉ 106. आप लोग रिसर्च करिए, आपको क्या काम है, आपको यही काम है. आजकल हमको देख के खुशी है कि लोग फोन पे जो है जजमेंट देखते हैं कोर्ट में. आप तो इमीडिएट आधा घंटा का टाइम मिलेगा, फोन को यूज कर रहे हैं. सिर्फ आइए में नोटिस हो. सिर्फ आइए. Out of turn mention case from release item 50, second to 72 of 2025. Yes, respondent कहाँ है? Now, मेरा response. because your lordship now has fixed, my learned friend is appearing. I'm thankful to you. Tomorrow is the day. Substantial law has been framed. Sorry, madam. Substantial question of law has been. Yes, just क्या करना है? आपको बहस करना है कर सकते हैं, और आपको स्टे करना है स्टे कर सकते हैं. आप whatever you choose. Out of turn आए हैं. I don't expect that you are ready. I am ready. चलिए बहस. ठीक है. But the issue which has been formulated is already settled. Okay, right, very nice. बताइए कौन सा है? To show me which judgment. कौन सा order से फ्रेम हुआ है? Order है 10th of September 2025. 10 September. चलिए. Only one. Then he is saying it is already settled. कौन सा judgment? First let me see what judgment is. हाँ हम देख. लेकिन एक error है, typing error है in your lordship's order by which it was framed. The first question is, it is actually not reversing, it is affirming. Affirm. ठीक है, वो तो इससे तो कोई डाउट नहीं है ना. Affirm किया है.
Concurrent. देखिए, at the outset, the learned counsel for the parties are jointly submitted that while framing the substantial question of law by order dated 10/9/2025, an error has been crept up in substantial question of law number 1. In the first line, the word reversing has been used, although it ought to have been affirming. Accordingly, the substantial question of law will be read as under. ये दोनों को 1, 2 को वो word change करके करेंगे. But as per fact, I filed a suit for eviction on the ground of default. नहीं, आप बोल रहे हैं कोई settled. हाँ, नहीं, फिर हम उनको सुनेंगे. या तो कोई settled है तो तुरंत ही decide हो जाएगा. हाँ, तो वो judgment आप देंगे तो he will keep it in mind that this is the judgment and then he will argue. पहले उनको सुनेंगे उसके बाद you are the respondent. कौन सा judgment? हम directly कौन सा judgment से settled है बताइए. Can you take this judgment? 2009 Before this mirror, this is the first judgment mirror. Receive this first. These two judgments. फिर और भी मतलब हम आ रहे हैं उसमें 5 नहीं मतलब थोड़ा सा इसका फैक्ट्स हम से देख लेंगे मतलब इसमें भी सेम चीज था मतलब इविक्शन सूट में मतलब at the stage of argument the agreement was produced not which was allowed by the court below which is the first substantial question of law which was allowed and which traveled to the high court. We will kindly see para number 4. Para number 4 I am referring to Mr. Justice Iqbal's judgment. Okay, para number 4. Sorry. Kindly take para number 3. The plaintiff aforementioned suit was filed with the opposite party for eviction on the ground of default. The defendant contested the suit by filing written statement stating interiorly that the plaintiff entered into an agreement with him for sale of the suit property. Both the parties led evidence in the said eviction suit, and after closure of the evidence, the suit was ready for argument. At that stage, defendant of the party filed in petition inter alia that since the plaintiff denied the signature in the agreement to sell at time of the evidence, the same may be sent to the expert. Taking note of the fact the suit is running for the argument, the court below allowed the application on the ground that the crux of the point of the case is whether the plaintiff entered into an agreement to sell or not. This is the question. Perhaps the court below is not aware of the correct proposition of law that with regard to the scope of eviction suit, in an eviction suit, the issues with which is to be decided is whether defendant is occupying the premises in the capacity of a tenant and whether he has committed a mischief which makes him liable for eviction under the section 11(1) of the BBC Act. So far as the agreement to sell is concerned, it has no relevance with the eviction suit, particularly for the reason that the defendant has already filed a suit for specific performance with title suit number so and so. The court below has failed to take notice of the provisions of CPC and allowing the application for after closure of evidence and they were satisfied. Now, here in this case also, specific performance suit has already been filed. It is at the evidence stage. And the agreement, it is also well settled that agreement to sell does not create nor extinguishes one's title. And so far as genuineness of the agreement to sell is concerned, which is subject to the court below. What is the date of agreement of sale? Agreement of sale is 2009, which I dispute. 2009 is the agreement of sale. 9.
They say that there was initially an MOU of 2007, which culminated into an agreement to sell of 2009. 2009 is the agreement of sale. Yes. And- Date 30th of October 2008. I'm sorry, but I was corrected. 30/10/2008. 2008. And prior to that, on 3rd of September 2007, there was an MOU. 3/9/2007. But I'll be specifically relying on the clause of the agreement itself, which is dated 30th of October 2008. Now, my Lord Justice Marathia's judgment may also be seen. The next judgment. Just a moment. Yes. My Lord, this is again the same case where the Supreme Court judgment has been delayed. My Lord, Lordship may kindly find, my Lord, page number 21. My Lord. I am reading the second first column. Just a moment. Eviction suit, default Yes, personal yes. necessity. So, let's permit Page number? the facts also. My Lord, if required. Yes. Is Shall we? it finding? My Lord, page number 21. My Lord, above, my Lord, para number 3. Has Lordship got that? Yes. The ground of bona fide personal necessity was not denied and disputed, and the only as this much was said that no relationship may not exist, and therefore the object party cannot claim eviction suit. The General Counsel appearing for the petitioner submits that the suit is not maintainable, and the petitioners are entitled to protection under Section 53 capital A of the Transfer Property Act, as they are occupying the premises in the part performance of agreement to sell as an owner. He had further submitted that the husband of the object party number 1 admitted in para 23 of his cross-examination that the petitioners are not his tenant. Lord, he relied upon so and so. Lord, this is 2001 to JLGR Supreme Court 372. This is the judgment which Reliance has been placed in court below, and the senior is also relying. This is the only judgment. The Lord, There is one more 2002 366 Lord, उसी के अंदर है, उसमें वो reference है. ठीक. Lieutenant Counsel appearing on behalf of object party on the other hand supported the impugned judgment. He has submitted that son of the original defendant in paragraph 5 when he cross-examined clearly admitted that they were living in the suit premises as a tenant. Lord, again, my Lord, Justice Iqbal's judgment has been relied upon. Number para 5. Thus, the only question involved in the civil division application is whether on the basis of purported agreement to sell dated so and so, the defendant petitioners can contend that the eviction suit filed by the plaintiff opposite party based on the registered sale deed dated so and so is barred or not. That right, no, my Lord, finding at my Lord, page number, last page, my Lord, para number 8. The facts are discussed. My Lord. The judgment of so and so is not applicable in the present case. Well, this is the first judgment. Sorry, not first. Initial Para 22 में. The son of the defendant himself admitted. On the other hand, it is said, but on the other hand, it further appears that the said agreement was valid only for 11 months. Sorry, where is Lordship? ये पेज नंबर 22 में लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म. हाँ ठीक है. Therefore, it is clear that agreement became unenforceable after 11 months from the date of its execution. So and so. Thus, on one hand, the petitioners are relying on purported agreement which became enforceable, and on other hand, it became unenforceable, and on the other hand, the opposite party is relying on registered sale deed executed on so and so in her favor. Apparently, the opposite party defendant derived title on the basis of the registered agreement sale deed dated so and so. As noticed above, the petitioner was a tenant under the vendor of the opposite party. It may also be noted that here the petitioners have not disputed the bona fide requirement of the plaintiff. The judgment of so and so is not applicable to the present facts and circumstances of the case. The question in that case was different, as would appear from the paragraph 1 thereof. In that case, the suit was brought for transfer for recovery of the possession, whereas the present case has been filed by the purchaser of the suit premises on the basis of an undisputed registered sale deed. Similarly, judgment of so and so
Kathy Nath is not applicable to the present case. The question involved in the said case was different. That is, whether the execution of an agreement to sell by the landlord when the tenant and the landlord having received substantial portion of the sale consideration. The relationship of the landlord and tenant inter se between them ceases of fresh rights and obligations flow under the agreement. It was found that the said case that the substantial portion of the sale consideration was paid to the landlord, whereas the perusal of the purported agreement relied on a defendant. It appears that against the sale price fixed of rupees 2 lakhs, only 20,000 was paid as an advance. More so, no or notice above judgment agreement itself came unforeseeable. Lord, the paragraph 4 of the judgment relied by Mr. So-and-so, relevant counsel for the plaintiff in so-and-so. So therefore, it is not a situation where the agreement cannot be seen at all. Yes, It was a fact situation that where only a very minuscule portion of the consideration was paid. There are situations of this nature when there is a landlord-tenant relationship. The landlord enters into an agreement with the tenant that yes, I will give you this property, I will sell this property to you. And that agreement of sale is there. And then the tenant claims, it is very regular, these things are coming. The tenant claims that no, my relationship of landlord and tenant has ceased because of this agreement of sale, and therefore I cannot be termed as a default. Right? So, merely because there is an agreement of sale, that does not mean that the tenant cannot take a plea that there is an agreement of sale. Lord, they are saying, my lord, that since we will see that what they are saying. You have not permitted him to argue so far. My lord, I only said You that said it is a that covered the matter. question of law is covered. Yes, my lord, it is covered, my lord. Yes. Therefore, I placed on them. If he argues, my lord, I will answer to him. Let him argue, my lord, I will answer thereafter. Yes. According to me, Your Lordship, it is covered by the Supreme Court judgment, absolutely covered. This Your Lordship has referred in another case also. Just आपको दोनों covered बोल रहे बिना fact नहीं के हम इसी के second लिए opinion नहीं decide covered करते in the हैं. sense यहाँ difference है. Yes. What my learned friend is saying, all those are on facts of a particular case. What was the ratio? Ratio of this particular judgment which have been placed by me, it is that by way of, if the by entering into an agreement, if the parties change their position from landlord tenant to agreement holders, seller and purchaser, then they no longer remain a landlord-tenant relationship, and that is essential for the purpose of instituting a suit under the rent control. So the moment an agreement is entered into and the parties change their stand, then absolutely the landlord. Now here Because you this particular, it is not a case of seeking protection under section 53A. If they seek protection under section 53A, if the agreement is unregistered, I will not permit that, because the law says that protection under section 53A will be available only to a person if the agreement itself is registered. But when it comes to specific performance of contract, then under such circumstances, if a person is seeking unregistered agreement is also a valid agreement. Yes. Right? So therefore, the Honorable Supreme Court is of the view that if there is an agreement of sale, the terms and conditions of the agreement of sale is to be seen into. It is not to be thrown into a dustbin completely. Lord, it has not been thrown. Therefore, it has been marked as an exhibit. But Lord, the eviction suit, the title has not to be gone. So It has been marked as an exhibit. Yes. Has the terms and conditions of the agreement of sale has been taken? But Lord, in so far this is Justice Iqbal's judgment, we have seen in 2003 judgment. It says, my Lord, that is not relevant for the eviction suit. You So have a when better you case. when you say that the agreement of sale is not relevant for the eviction suit, it means that this judgment of the Honorable Supreme Court is meaningless. When in a landlord-tenant relationship, the Honorable Supreme Court is considering the terms and conditions of the agreement of sale, then the Supreme Court should have simply said that if there is a relationship of landlord and tenant and if there is an agreement of sale, it is meaningless unless there is a registered sale deed, the tenant does not become a owner of the property. Lord, And his liability to pay rent continues. Lord, this is an unregistered agreement, my Lord. Yes. This cannot be looked into evidence, my Lord. No, not that. This is what I am saying. If it is 53A, Uh, then it cannot be looked into because This is 53A protection, 53A protection
is not available with respect to unregistered sale deed after 2001. But 53, and they are claiming possession, my lord. They are claiming on the basis of that No, agreement. they are not claiming possession on the basis of the agreement. They say that they were already in possession of the Yes. property, but the relationship of landlord and tenant has been. And thereafter 53 comes into play, my lord. My lord, after the agreement has been entered, now they are no more a tenant, rather they became a landlord, and their 53 comes into play. If you say 53A comes into play, then you, if we had examined it, whether the suit for specific performance of contract is maintainable Yes, on the it is basis. maintainable. It is My lord, I will maintainable. cite that judgment also, my lord. I have also brought that judgment. That's in the suit for specific performance. अभी तो कुछ फैक्ट भी नहीं देखे आप लोग ये रिट की तरह मत बहस नहीं। करिए ये कोई प्रिलिमिनरी ग्राउंड पर हम इसको देख नहीं सकते हैं जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बना है तो उसका आंसर करना है बट आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट ऑल जजमेंट्स यू आर साइटिंग आपने इनको जजमेंट की कॉपी दी हाँ, my lord, will give it. My lord, he has given me. सुनेंगे फिर क्या करेंगे देखिए essay number 72 of 2025. The learned counsel for the parties are present. This matter was mentioned by the appellant to be taken up out of turn. The learned counsel for the appellant has submitted that there is urgency in the matter as writ for delivery of possession is scheduled to be issued tomorrow. Tomorrow. Is that correct? My lord, I have no. Your Lordship, I'll Just not, नहीं, just but please hold on. अरे भाई एक ठीक है is scheduled to be issued. But हम fixed गलत tomorrow. स्टेटमेंट नहीं देना चाहते इसलिए हम ये बात बता रहे हैं इट इज फिक्स्ड टुमारो इफ आई आर नॉट ब्रिंग Tomorrow स्टे is the ऑर्डर date fixed, देन my lord. रिट वुड बी इशू Okay. Yes, The next date in the matter is tomorrow, and if the interim order is not passed by this court, then writ for delivery of possession will be issued. The counsel for the respondent has submitted that the matter arises out of landlord-tenant relationship and he is fully ready with the case. Consequently, the hearing of this case has commenced with the consent of the parties. As the court time is over, pose this case for further hearing. कल 10:30 बजे आ जाएगी ठीक है और जो जो जजमेंट्स आप लोग को देना है इसके अलावा कोई जजमेंट देना देखिए हम आई एम ए वेरी स्लो रीडर राइट I take my own time to read and understand judgment and every judgment whenever it is cited I read it properly. Yes, my lord, I have seen. Because every judgment Each has a and every different paragraphs answer. refer to the judgment, my lord. हाँ, Whatever I इसलिए refer. हम बहुत ध्यान से करते हैं आपको भी बता रहे एक जजमेंट में मैंने होल्ड किया है जिसमें एग्रीमेंट में देयर वाज अ क्लॉज that he would pay or he would not pay rent. In that case I have decided. लेकिन मुझे तो citation नहीं हाँ, चाहिए ये हमको उनको बताइए This is by we your will have to Lordship, distinguish in this, which ना? your Lordship has held और otherwise in दूसरी that. बात क्या है कि if a substantial question of law is decided by this court, then it is binding, unless it is satisfied. क्योंकि substantial question of law is a proposition of law which is decided for the whole state. My lord. उस पर हम फिर different view नहीं ले पाएंगे. If suppose, my lord, the coordinator bench, Distinguishable होगा. if suppose, my lord, the coordinator bench has also decided similar issue, my lord, then. तो फिर उस समय नहीं प्लेस हुआ तो फिर आप बोलिए इसको लार्जर बेंच में भेजने के लिए. हाँ, ठीक. लेकिन सेकंड अपील में डिसाइड Second होना appeal, चाहिए. हम दिखाएंगे. हाँ दिखाइए लेकर आइए we will This see my that. lord preliminary थे इसलिए हमने. इसीलिए आपको देखा ना इतना प्रिलिमिनरी तरीके से सेकंड अपील नहीं बहस कर सकते. बिल्कुल. ठीक है My lord. इसीलिए आप कल आइए कोई भी जजमेंट्स हो तो रात को भेज देंगे. बिल्कुल, बिल्कुल, my lord, will do. हम लोग अपने देखेंगे इसको और अगर मान लीजिए अभी कोई लिस्ट ऑफ जजमेंट्स है अभी आप लोग दोनों देखते हम हैं. देते हैं. हाँ, ठीक है, हम हम नया देते हैं. नया जजमेंट देते हैं तो पूरा फैक्ट हमको देखना पड़ता है. बिना ठीक, फैक्ट ठीक. देख के हम कोई जजमेंट ऐसे साइन. My lord, I'm deeply aware. ये दोनों ये तीनों जजमेंट ये आपके नाम की तरफ से ये दोनों respondent के और वो अरे हमको मेरा जजमेंट तो हमको बताइए. हाँ आपकी Second appeal, 80 of 2011. सेकंड अपील 80 of 2011. 80 of 2000 My lord, decided on 20th June 2025. 26-25 इसका जरा चेक करेंगे ऐसे इसमें आप होल्ड की थी अगर कुछ भी किए होंगे लेकिन हम एक क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट पर डिसाइड हाँ, किए. एकदम एकदम इसमें ये पूरा बंच है जो पहचान आपने आपको मिल गया सर. हम ले लेंगे citation. हाँ ले लीजिए सारा ले लीजिए ठीक है. My lord. हाँ कल 10:30